हाँ रत्नाकर बाबू रत्नाकर बाबू शुणी पारुचंदी अनम्यूट करंतु Okay, good afternoon to all of you. Could you able to listen me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Today camera is also there. I will now put up a PowerPoint. We will go with that. अच्छा PowerPoint देखी पारुछ Sir, namaskar. Again, sir. अच्छा Yes, sir. हाँ हाँ ताले आज ठीक अछि आज सब दिन ठीक चलिबो आज जणा पड़छि द मॉर्निंग shows the day so everything is all right in our favor. Okay, हमें काली जहाँ डिस्कस करथले we will continue with that. से काली हमें जाइथिले ई जगह देखि सारिथिले ऑलरेडी डिस्कस करि सारिथिले तम कोर्स रो बर्तन जो पांचटा पेपर अछि ये मॉर्फोलॉजी रे फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दीटा गोटेला स्टैटिक एंड डायनामिक 1 स्टैटिक एंड डायनामिक 2 तापर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी पांचटा पेपर अछि विदिन जियोमॉर्फोलॉजी पांचटा यूनिट मेजर ब्लॉक अछि ब्लॉक भितरे यूनिट्स अछि आ टोटल यूनिट्स हला 17 टा से 17 टा हमें काली 7 टा 8 टा बंद जाइथिले यूनिट 1 तेरा डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी डिस्कस करी ऑलरेडी दुई बेसिक पोस्टुलेट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी जदि आ कोटा इंपोर्टेंट दरकार पड़िबा हम आसीबा सर दे कि आसीबा विल कम बैक टू द discussion points. Geomorphic system and concepts. Theories of development of major landforms, which are internal structure, isostasis, eustasis, continental drift, plate tectonics. Tectonic processes and landforms, earth movements, epiorogeny, orogenic movements, orogenic movements, epiorogenic movements, landforms associated with epiorogenic and orogenic movements. Sixth, tectonic processes and landforms.
2 जोथिरे कि थिला volcanism, volcano, causes of volcanoes, classification of volcanoes, global distribution of volcanoes, volcanic landforms, extrusive landforms, intrusive landforms, earthquakes, causes of earthquakes, measuring earthquakes, distribution of earthquakes, and plate tectonics, impact of earthquakes. ଏଯାକ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ସାରିଥିଲେ weathering ରେ physical weathering, chemical weathering and biological weathering. ତାପରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିଥିଲେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ଆମେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ? सर वेदरिंग जे पढ़ा ହେଇଥିଲା କାଲି ସାର୍। ଖାଲି weathering ଯେ ଓକେ, ତାହେଲେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତେଣୁ ୟୁନିଟ୍ 8 ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା 17ଟା ୟୁନିଟ୍ ଭିତରୁ ୟୁନିଟ୍ 8 ହେଲା ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ. So mass movement is a very important process in geomorphology. We need to understand what is this mass movement. Mass movement means movement of a mass of rock at a time under the force of gravity, without the help of any agent or without help of any other processes. कौन सी प्रोसेस रहेगी, कौन सी एजेंट न रहेगी, कौन सी जगह mass of rock move करे from one place to other and creates a type of landform. हमें कहू ताकू mass movement and related landforms. ତେଣୁ ଏ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଡ୍ରାଇ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଟ୍ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଡ୍ରାଇ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ରକ୍ସ ଅଛି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେଇକି without water or without moisture, dry rocks, they are moving. It may be a group of rocks, it may be a group of blocked stones, it may be pavement, pebbles, sand, anything that can happen that can move on a particular slope, on the mountain slopes normally. So that is what is called mass movement. Then we have a landslide. When we see a landslide, what happens? A mass of rock is moving down from a particular position, sliding across the slope and then falling onto the foothill of that region where it is happening. So this is what is called mass movement. Nobody is allowing this to move, only there is a weakening of the structure, dislocation of the structure by the percolating water or by some disturbing forces, loss of equilibrium at the place where the mass movement is supposed to take place, and then when the mass is dealing from the parent material, then now it is losing its equilibrium of rest, so it has to move down along the slope because there is a slope downwards. So under the pressure of gravity, it will be moving down. So no agent is involved here, no neither river nor water nor glacier. It is that mass itself is moving now under the gravity, and that may create a landform, that may create havoc also like a disaster. But it depends on, we are interested in geomorphology. So in geomorphic processes, what are those geomorphic processes associated with mass movements and how it is related to creation of different type of landforms, and simultaneously how this is also creating a problem for the human habitation and the people and the environment. So mass movement factors affecting mass movement, कौन factors रहिले ये type of situations हुए? What are the types of factors that is responsible for mass movement? Say in second discuss material types of mass movement. What are the different type of mass movement? Different type of mass movement means the speed at which the material are moving from the slowest to the highest speed. So that is what is the different type of mass movement. Then our कौन factors प्रथम mass movement रे कौन हुए types of mass movement? It is creeping type of movement, तापर creep movement, slide movement, slip movement, then it is fall movement. If you attribute to rock flow, rock slide, then rock slip or rock fall. But if you are taking out the rock and then put glacial, then glacial rock slide, glacial, because when there is a mixture of glacial ice and the materials, then it is a glacial creep, or it is a glacial flow, or it is a glacial
slide, or it is a glacial fall, to which we call it as avalanche. Avalanche mountainers face currently in the high mountains in the snow areas above the snow line. Those are just the kind of phenomena where the mass of rock associated with snow they fall down from a particular position with development of some cracks and dislocations, and then shifting of position from the position of rest of the parent body to a new location. So this is how this different type of mass movements are occurring, and they are occurring at different locations. Not necessarily everywhere everything will happen. And when this is in a dry condition, we call it as dry mass movements. If it is a wet condition, that means water is there, then it instead of slide, it becomes a flow. So it becomes a mud flow, or it may be a rock flow, or it may be a rock glacier flow, so like this. ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ନୋମେନକ୍ଲେଚର କରିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, what are the different types of mass movements. Slowest movement is creep, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ସ୍ଲିପ୍, ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍, ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଭେଲୋସିଟି ହେଲା ଫଲ୍। ଏମିତି ହେଇକି ଯୋଉ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯାକ ହଉଛି, ଏଇ ଯାକ ପାଇଁ ଗୋଟେ certain factors are responsible because there is no agent involved in this process, so only factors are responsible. Then we have to know what are the factors which are suitable for such kind of mass movement processes. Then a unit ଭିତରେ you will try to know what are the different type of mass movements in different parts of the globe. ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାନଙ୍କର ରକ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ଫ୍ଲୋ ବା ରକ୍ ଗ୍ଲାସିୟର କ୍ରିପ୍ ବା ରକ୍ ଗ୍ଲାସିୟର ସ୍ଲାଇଡ୍ ବା ରକ୍ ଆଭାଲାନ୍ସ or snow avalanche, ଏଯାକ କୋଉଠି ହଉଛି? Snow avalanche ହବ above the snow line over the mountainous areas where there is snowfall, continuous snowfall. But rock avalanche କୋଉଠି ହବ? That may be much below the snow line at some other place, not in the snowy areas. ସେମିତି ଆମର ଯଦି landslide ହେଲା, if this is a landslide, so it is below the snow line, but if it is a rock slide, that is glacial slide, then it is going to be above the snow line, where the mass of glacial ice along with the rock are involved in sliding down. जोटाକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଭାଲାନ୍ସ ବି କହୁଛେ। ଆଭାଲାନ୍ସ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍ glacial slides or glacial falls. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହଉଛି, where such type of things are possible, in equator, in tropics, in different countries and different locations, then which are those areas where things are happening, then what are the factors which are responsible? Rain is a factor, heat is a factor, fracture and joints is a factor, or the structure of the rock is a factor, the biological agents are a factor. They are breaking the rocks and dislocating the rock from the parent body. Weathering is a factor at some places. That is, weathering means in situ decomposition or decay of rocks, and then rock decay decompose and se jaga gote jagare jamichi gote time asibo se jaga sabu तलको खसिबा आरंभ करियो। जेमति तमे देखि छ, when you see you dump a truck load of sand गोटे जगह जे पानी पकेबा, it takes a particular position, आसे पोजिशन का आसे बंद बाली तक तलको ऊपर तलको खसतो देखि गोटे पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑफ रेस्ट आसियो। सेमति हमर जेतोले रॉक डिसलोकेशन हे जाय तार पेरेंट रॉक थारु सी शिफ्ट करे along the slope, along the gravity, and takes a position that will be sustained for the future to continue with the gravity. Then say jinsi jaga haba parjanta amku kichita condition responsibility rahichi, that we have to know. Most important condition hochi kono mass movement re the mass of rock will be moving from the parent body when they are dislocated from the parent material. If the parent material tharu alaga hei jaichi tahale that becomes a very conducive factor, with a suitable factor to slide down along a slope. Mountain slope, but a parent rock bhagaru but a rock isolate heiji by weathering process. And weathering erosion process is the isolate heiki rahichi ketol gote situation asibo, imbalance situation asibo, and that rock will either creep or slide or sleep or fall. ei jinsu jibo.
Then weathering is another one important factor. Then second one is geological structure of the rock is another important factor. Kahinki na geological structure kon kare? It used to carry a lot of joints, cracks, fractures, foliations. ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସେଇପଟ ଦେଇକି ପାସ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନୋ ଏରିଆ ହେଇଯିବ, if it is a cold area, ସେଇ ପାଣି ଯାକ କଣ ହବ ନା, it will become ice during the winter season. Ice ହେଇଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା, the volume increases. So when there is an increase in volume in the cracks of the percolating water, ତାର କଣ ହବ, volume will be more than the water volume. So there will be exertion of pressure on the rock. Then this pressure will continue till the ice melts again. Again, another season will come, again the same process will continue, and the fractures and joints will start. Some rock will break, and the broken mass will be deposited just in the foothill of that area where it is happening. Then there may be occasion when all these materials in a mass will slide down to the foothill region of the area where it is happening. So this is where what is happening. The geological structure is a dominant controlling factor in the landslide process. Another important factor is water. Water, what happens after the rain, percolates through these joints and cracks. Suppose it is a hot area, or this is not becoming ice, but the water is percolating. So the percolating water actually creates chemical erosion and decay and disintegration of chemical decay and disintegration of rocks along the joints, and joints start widening. As a widening haba pore aste aste gradually what happens, the rock is isolated from the parent rock and flow down. So these are all the different ways in which the factors are responsible. Tapare ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କୋ କ୍ଲାଇମେଟ ରେ କୋ ଟାଇପ ର कंडीशन प्रिवेल करे, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट रे हेवी रेन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्टर्स. In the temperate region and in the polar region, the ice is another important factor. The desert area re alternate heating and cooling during the day and night time is an important factor. Tapare the existing slope is an important factor. जो स्लोप अच्छी से स्लोप टा यदि कंडक्टिव नुह और स्टीप अच्छी ताले there will be mass movements. तो ये mass movement को बड़े-बड़े आगुटे वर्ड रे कहा जाए, that is also mass wasting. So the process of mass wasting, this includes slow process like creep, then after the creep, then we have the sleep, then we have the slide, then we have the fall. And slide is one of the most important of all this, because the landslide, what happens, the mass of rock slides along a slope. So it creates a destruction right on the slope on which it is moving. But when it is a fall, it directly fall from a particular point and come to a rest in another point. So the damage is taking place at the point where it is falling. But when the landslide is coming, it creates entire path through which the destruction happens. ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସିଏ ଡେଭାଷ୍ଟେସନ ହବ, ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବ ସେ ଜାଗା ସବୁ ଯିବ, ତାପରେ ଯଦି crop and other things that will be damaged, if houses are there that will be damaged. So of all these, landslide, rock slide or glacier slide is one of the important features and important mass movement processes which are affecting human settlements across the globe in different environments. ये जिन से का हमारा हुए कोटी तो इसी तरह देखते हो न्यूज़ पेपर रे आसे नॉर्थ इंडियन region, हमारे हिमालयन region रे, in the states of Sikkim, states of areas around Darjeeling, Gangtok, then the northern areas of Gangtok, Kashmir, Uttarakhand, parts of Himachal Pradesh. So these are the areas where normally you will find this kind of mass movement processes which are very active. Odisha re the mass movement heitila, there has been associated with the heavy rain during the Phylline time. During the Phylline time and during the super cyclone, there has been a lot of mass movements in the form of landslides. तापर आमर जो हुडहुड हो ये आस्तला, there is cyclone was passing through over south Odisha, Malkangiri ଆଉ तापरे गजपति district ର केते जगह मोहना block और then आर उदयगिरी block.
बहुत गुटे जगह लैंडस्लाइड होगी बहुत गुटे लोक ट्रैप होते से माने इवाकुएट करा हेतला. So there are situations, there are experiences in Odisha also, but because of this heavy rain. That's what Odisha, India, normally this phenomena is observed in the entire Himalayan belt. Western Ghat which area because Western Ghat is a relatively high altitude hill, so the slope is little more than the general slope. So conditions are suitable for mass movement. That's what Western Ghat किसी जगह रे भी होची. So this is what is the distribution of mass movement processes across the country. A world scale देखले तो all these mountainous areas are prone to landslides, glacier slides, rock slides, glacial slides, glacial avalanches, and बहुत गुड़े जिनसे रही that relates to the mass movement process. So mass movement process also at times a normal process which goes very slow, but when it becomes a very high speed with a lot of material involved, then it turns out to be a disaster. So things has happened in such a scale that many villages have been buried under the mud flow at volcanic sites and at different sites where the volcanic mud is coming out, oozing out from the underground onto the surface and flowing down and then getting into the valley and burying the entire settlements has been noticed in the world in the West Indian islands, Central American and parts of Malaysia, Burma, in these areas. So there are many evidences and many examples of this kind of mass movement in the form of mud flow or the rock flow. Mud flow is water in a water medium, rock flow is in a dry medium. Without water also mass of rock fragmented materials are sliding down at a time. So this is all about our mass movement processes. Chapter 9 is our fluvial processes Hello. and land. Sir, Yes. namaste. Namaste. Sir, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ମାନେ ଆପଣ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ ଦେଖା ସ୍ଲାଇଡ୍ ନା sir ମତେ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି ସେଇ ପାଇଁ ପଚାରିଲି. ତମର ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଲ Yes, sir. ଆଜ୍ଞା This is sir. sir. This is. ହଁ ତାହେଲେ ତମର କଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସିଷ୍ଟମରେ ନା ତମର ନେଟ୍ ପାଉନଥିବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ Yes sir. ହଁ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କାରଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚାଲିଛି Sir ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେୟାର କରିବେ. ଏଇଟା ତମର କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ତମର କୋର୍ସ ଅଫ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟଡିରେ ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ରଖିଛି କୋଉ ହେଡିଂରେ କଣ କଣ ତମ ଜିନିଷ କଭର କରୁଛି କହିବ ଯେ ସେୟାର କରିଦେବି କହିଦେବ ଯେ ସେୟାର କରିଦେବି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ଯାହା ତମେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି यूनिट 9 ହେଲା ଆମର fluvial processes and landform fluvial process and landform କଣ ହେଇଛି now we are trying to now study how the different type of agents of weathering and erosion are responsible for creating different type of landforms on the surface of the earth. Now of that one of the most important agent is the river, running water in the form of river. So running water in the form of river covers almost 70% of the global area where they have their imprints and where they have shaped the morphology of the earth surface through valleys, through different type of features, through the meanders, through the deltas, through various other kind of features. Then Earth's 70% area is occupied by the action of the running water. And the running water, the most important is running water ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା କହୁ ରନିଂ ୱାଟର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରନିଂ ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକି ଏକୁମୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲେ ତାକୁ ଆମେ ରିଭର କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରନିଂ ୱାଟର ଚାଲିଛି ଅନ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଓଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ତାକୁ ଓଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ଯୋଉ ଓଭରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରେ କଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ରିଲ୍ସ ଗଲିଜ ରେଭାଇନ୍ସ ଏମିତି ସବୁ କ୍ରିଏସନ ହୁଏ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ହାର୍ଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଅଫ ଦି ରକ୍ ଓଭର ଦି ସର୍ଫେସ୍ ତାପରେ ଆ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଏକୁମୁଲେଟ୍ କରିକି କିଛିଟା ମିଶି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ वी କଲ୍ ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ the stream ଟା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇ ଚାଲେ and we call it as a river ତାପରେ the river moves carrying a number of huge amount of water collected from the tributaries, not distributaries. They are collecting the
water from the tributaries. What tributary means the rivers which are coming and joining with the main stream. They are the tributaries. Then good tributary asking miss as a black hiki main stream re pani tako tolku move kare down the slope. So fluvial processes. So the processes associated with this river action is a dominant process of landform evolution on the earth surface. ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ what is a drainage basin. Drainage basin କଣ, water flow କେମିତି ହୁଏ drainage basin ରେ, how we estimate water flow, what are the fluvial erosion processes, କୋଉ process ରେ erosion ହୁଏ, କୋଉ process ରେ transportation ହୁଏ, କୋଉ process ରେ deposition ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ erosional landforms କଣ ମାନେ ହୁଏ, ଆଉ depositional landforms କଣ ହୁଏ. ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ that fluvial process related to the river. So when a river has to come, river is always having a catchment area. ଗୋଟେ catchment area ଅଛି river. ଯୋଉଠୁ କି ପାଣି ତକ କଲେକ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଜାଗା ସେଇ ନଈକୁ ଆସେ. ମନେକର ଗୋଟେ ପାହାଡ ଅଛି, ପାହାଡର ଗୋଟେ ପଟୁ ନଈ ବାହାରିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ପଟୁ ନଈ ବାହାରିଛି ସେଇ ପଟ ଏରିଆଟା ରହିଲା ପାହାଡର ବେସିନ ଭିତରେ. ଯଦି ତାର ପଛପଟକୁ ଯଦି ଆଉ ନଈ ବାହାରିଛି ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ୱାଟର ଡିଭାଇଡ. ସେ ପାହାଡଟା ହେଲା ୱାଟର ଡିଭାଇଡ. ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ପାଣି ଗୋଟେ ପଟକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡର ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଈକି ଯାଉଛି. So that becomes a water pathing or a water divide or a water shed. ଆକୁ କୁହନ୍ତି water shed ବୋଲି. ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆମେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ନଈର ସବୁ ଯାକ ଏରିଆକୁ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀକୁ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ବାହାରିବ ବା ଡ୍ରେନେଜ ବେସିନ୍ ବାହାରିବ. ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ, ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ରିଭର ବେସିନ୍ ଏରିଆ. ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ that ଗୋଟିଏ ରିଭର ଏତିକି ଏରିଆରେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଛି ଆଉ ଏତିକି ଏରିଆରେ ସେ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଇନ୍ taking water, collecting water after the rain in the form of rivers, and simultaneously it is eroding the valleys and carrying the sediments and forming landforms of different type and different form across the valley, away from the valley, and along the river mouths, along the river banks. ଏସବୁ ଜିନିଷ କରେ. ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଡ୍ରେନେଜ ବେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ. What is a drainage basin, what is its characteristic, and how it is identified from the water side or from the water parting or water divide. ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର ୱାଟର ସେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଳେବେଳେ କରାଯାଇଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋ ୱାଟର ସେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ. ମାଇକ୍ରୋ ୱାଟର ସେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟେ ବାହାରିଛି, ସେ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ରହିଲା ସେତିକି କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ପାଣିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ରଖିବା, ସେ ପାଣିକୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯିବ. ସେଠି ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍ ନୁହଁ, ବାଟି ଗୋଡ଼ି ଦବେଇକି ତାକୁ ରଖିବା, ସେ ପାଣିକୁ ପୁଣି ରଖିକି ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ସ୍ଲୋଲି ଛାଡ଼ିବା, ଯୋଉଟା କି ସେ ଏରିଆରୁ ପର୍କୁଲେଟ କରିବାରେ ପାଣିଟା ରହିବା ଯୋଉ ପର୍କୁଲେଟ କରିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ and allow water to go slowly for a long period of time. ନହେଲେ ତ ପାଣି ଦିନେ ଦି ଦିନରେ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା. ସେମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା so this is how the water shed is maintained with a source area of water. ଆଉ ସେ ୱାଟରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ହବ. କାହିଁକିନା ସେ ୱାଟର କ'ଣ କରିବ ନା ଏଥିରୁ ରିଚାର୍ଜ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସେପଟେ ଚାଷ କରିବେ, କି ପରିବା ଚାଷ କରିବ, କିଏ ଭେଜିଟେବଲ ଚାଷ କରିବ, କିଏ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବ, ଏସବୁ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ବୋରୱେଲ କରିକି କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଆଭେଲେବଲ ହବ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ. ତ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫେଭରେବଲ. ତା ଛଡ଼ା ବି ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଡକେରୀ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରିବ. And it can be a economic rehabilitation for a number of people in the panchayat or in the block. ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ. ସାର୍ ନମସ୍କାର. Yes. ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସାର୍, ଯୋଉ ବେସିନ୍ ଅଫ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ସାର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିପାରିବ ତ ସାର୍? ମଲ୍ଟିପୁଲ ଷ୍ଟେଟରେ ସାର୍ ଯେମିତି ସାର୍ ମହାନଦୀ ରିଭର ବେସିନ୍ 8 ଷ୍ଟେଟରେ ରହୁଛି. ରିଭରର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଇଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ. ପଲିଟିକାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସାଙ୍ଗେ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ. ଅନେକର ଆମର ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର, ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ. Ganga river, part of it is in India, part of it is in Bangladesh. Brahmaputra also. Mahanadi is also part of this is in Chhattisgarh, and a part of this is in Orissa. Then the Brahmani Katha, part is in Jharkhand, another part is in Orissa.
जदि हमें सुवर्णरेखा देखिबा ताले मेजर पार्ट इज इन वेस्ट बेंगल and a very small portion remains in Odisha. You know, it can be multiple states. Okay, sir. Thank you, sir. सेमती जदि देखिबा हम जदि यूरोप रो डान्यूब रिवर मलगा रिवर ए जगह देखियो से जगह तो सबटु बड़ बड़ रिवर 10टा 12टा कंट्री देखि पास करछन. And so they have their watershed area spread over 10 to 12 countries. So situation. So it can the drainage boundary or the watershed boundary or the catchment basin area can go beyond the political limit of the states of the country. Okay. अच्छा तापर हमर ड्रेनेज बेसिन आसी गला पर ड्रेनेज बेसिन पर हम तक से जगह रो वाटर फ्लो को हमें केमिति क्वांटिफिकेशन करि परिबा काना हम तोरे प्रोसेस को स्टडी करिबा द अमाउंट ऑफ इरोजन अमाउंट ऑफ डिपोजिशन दैट रिवर विल टेक it will depend upon what is the amount of water that is being carried in the river at different times. Then what a flow of water to estimate करा जिवो केमति estimate करा जिवो तो वर्षा हला गोटे पर्टिकुलर टाइम रे एई मासे रे एतिकी वर्षा हेछि कैचमेंट बेसिन रे तन केते अमाउंट ऑफ वाटर से जगह रो यील्ड करिवो आ से पानी तक केते समय परे आसे की से चैनल दे की गोटे पर्टिकुलर पॉइंट जोठी के ऑब्जर्वेशन पॉइंट रो से पटे पास करिवो जेटा को सब एस्टिमेट करा जाय ता पे गोटे थ्योरेटिकल हमरो एस्टिमेशन कर्व्स कराइछि बा स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग कराइछि based on some of the sample observation nei ki laboratory test kari ki jinse ko establish karaichi that what is the kind of amount of flow with the amount of rainfall over a particular catchment jo catchment ra ki puni अन्य parameters rahichi the catchment re managar basin area etik achi tar forest area etik achi tar non forest area etik achi human settlements etik achi tar slope etik achi तापर तार सर्कुलर इंडेक्स या तार लेंथ रेशियो होजी या ये सब जिनसे को नहीं कि the water flow will take place and the velocity will also be there. The velocity and water discharge. Then हमारे तो flood आसे से तो लोग announce करेंगे नहीं. Mahanadi river is going to discharge 10 lakh cusecs of water at Naraz. हम तो declare कर रहे हैं. Mahanadi river is going to have a flood with 10 lakh cusecs of water discharging at Naraz. ता माने लगा माने महानदी कैचमेंट रु वर्तमान 10 लाख क्यूसेक पानी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर रिलीज हबो एट एवरी मिनिट गोटे मिनिट रे एथि क्यूसेक वाटर रिलीज हबो फ्रॉम नराज टू द डाउनस्ट्रीम साइड देन 10 लाख क्यूसेक वाटर माने हमर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर भी बेले बेले एस्टिमेट कराई कि रखाई जे सब जगह रहिलो जति जगह नई रहिला तळे आ ऊपरे do they have the carrying capacity of this much of amount of water कारण ये बहुत गुडे ट्रिब्यूटरी आसी कि सब एकठी कि मेन स्ट्रीम रे आछन तेनो मेन स्ट्रीम रो कैरिंग कैपेसिटी अछि ना नै एति पानी होल्ड करिया पे जदि एति नाही तारे पानी कम करियो दी कोड को स्पिल करियो ऑन द रिवर बैंक एंड विल क्रिएट अ फ्लडिंग सिचुएशन तापर जेतो डिस्चार्ज हो से तो विल डिस्चार्ज थ्रू डिफरेंट रिवर्स से रिवर जगह कैरिंग कैपेसिटी केते अछि केति की पानी छाडीबो को नै कि माने महानदी ए हमरो काजडी महानदी डिवाइड होला जो पानी आसिला महानदी रे से काटजोडी केते गला एठी केते गला से जिनसटा पुनी एस्टिमेशन हो तार कैरिंग कैपेसिटी रही परछि रे जरो फ्लड को महानदी रे बार अछि ना काटजोडी रे बार अछि कोडी बेसी फ्लड बार अछि ए सब एस्टिमेशन देगा करा जाय ता सहित भी हमर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन दे भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पांसिबल आबे तो कहि आज वैलीटा एमती डेवलप करूछि वैलीटा ए टाइप रो कैरेक्टराइजेशन करिछि वैली रो स्लोप ए कंडीशन रे अछि एना वैली रो स्लोप कोन देयर इज स्लोप फ्रॉम द source of origin to the source of destination पर्यंत जो कर्व रे पानी चली छी गोटे पर्टिकुलर हाइट रो ओरिजिन हेछि आ गोटे पर्टिकुलर हाइट रे जाय कि पड़ी छी तब केते डिस्टेंस से कवर कला से डिस्टेंस भीतर व्हाट इज द angle of inclination based on that slope the water will be flowing then see velocity ta estimate kara jaye and then एमती करी कि हम we try to estimate the water flow and water flow सहित केते amount of sediment आसीओ सेटा भी पुनी तापर estimate करा जाय जति हम flow of water कले 10 lakh cusecs 10 lakh cusecs भीतर हम तीन प्रकार sediment आसीओ गोटेला floating sediments आसीओ गोटेला dissolved sediments आसीओ गोटेला bed load sediments आसीओ माने बेड रे किसी sediment गडी 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 जीवो ताको कहंदी bed load और traction load तापर जति किसी dissolve हे के असला से जगला dissolve load तापर जगह फ्लोटिंग गला जगला फ्लोटिंग लोड तो एमती तीन प्रकार जो सेडिमेंट आसीओ से जगह एस्टिमेशन पड़ी करा जाय से जगह एस्टिमेशन करी कि देखा जाय को जगह रे केते पति हेबार अछि को जगह केते टाइप रो
वैली क्रिएशन हबार अछि कि टाइप सिचुएशन क्रिएट करिवो रिवर तेरे ए जिंस जाक वाटर फ्लो सहित बहुत रिलेटेड then we try to understand how the water flow equations are used for this kind of water discharge and then water transportation process तापर fluvial erosional process रे कोन करे what the rivers used to do in a erosional process कोन कोन रहला तार now when a river water moves on the earth surface along the gravity or along the slope first la ground रे कोन होना scoring of the by the frictional contact and the scoring the river bed is eroded river bed is deepened gradually যদি বেশি স্লোপ রে যাଉଛି তাহলে ভ্যালিটা vertical down से vertically digging ही चलिवो and it will create a V-shaped valley and that will be the process in which the V-shaped valley formation will continue till the river will be reaching to the base level माने जो पर्यंत अछि से पर्यंत तार टेंडेंसी रहइबो वैली को इरोड करिवा पई वैली को से पर्यंत माने के गोटे 100 फुट रो माउंटेन अछि से 100 फुट रो माउंटेन ऊपर गोटे नई बहुत ही बर्तन आसी जाइए प्लेन रे पहुंच जा पे हेले तार 100 फुट रो डेप्थ को 100 फुट रो जो हाइट है से 100 फुट हाइट क्रॉस कर जाके आसीबो तो से डेप्थ को बंद इरोजन करि परियो जो 100 फुट पर्यंत काहे ना 100 फुट पर से प्लेन हे गेला रिवर बेड विल बी हॉरिजॉन्टल so there will not be any slope so से पर्यंत ही डिगिंग करियो so that is what is called as the base level of a river then से base level पर्यंत the concept of base level जाना है जहां पे जाके नहीं कि माने इरोजन will continue then is a process of scoring of the bed that requires abrasion बोले so abrasion is a process where the rocks will slide on the ground and on the river bed during the movement तापर पुनी movement of water रे पुनी तीन प्रकार movement अछि गोटे अछि laminar flow गोटे अछि non laminar flow laminar flow माने गोटे continuously slow rate of movement will continue with small rills and valleys ए टाइप रो water will move that is called laminar flow देखियो पानी टा बहुत स्थिर होई कि थिबो और धीरे 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 खरा दिन मानकर तो पानी सुखी जाइथिबो अल्प पानी थिबो जाउथबो लहरी that is what is called laminar flow बहुत small amount of water will be flowing किंतु आउ समय फ्लड फ्लो अछि जो समय कि there is extreme lot of water will be coming in a gyral movement and formation of the gyre जोटा कहंदे हमर भौरी भौरी करके पानी बहुत जोरे आसीबो जब भौरी करके पानी आसे से समय कोन करे जोठी भौरी भी से जगह खुली जाए ग्राउंड रे आ तापर ता पाख एरिया रे से खोला माटी जगह जाई डिपोजिट हुए तेन जोठी भौरी करे तार से जगह कहंदी पूल आ जोठी जाई से डिपोजिट हुए से तला रिफिल तेन पूल और रिफिल तापर पुणी और पूल और रिफिल एमती कंटीन्यूअसली रिवर विल गो ऑन मेकिंग पूल्स एंड रिफिल्स in a particular flow with a particular amount of water কিন্তু আর গোটে flow আসলে পুনি সে হয়তো full refill চেঞ্জ হয়ে যায় পারে so these are not permanent these are all temporary so that is a process in which water transportation takes place then এই process রে যেতলে যায় তার ভিতরে কোন হয় না যে ফ্লোটিং কন্ডিশনে যে রক জায়গা যাନ୍ତି সে জায়গা বাইরে এই নিজ নিজ ভিতরে তাকে কহନ୍ତି attrition process abrasion process attrition process तापर जो कदी कड़रे जदी घसी कि जाउछ रिवर बेड ताको करोजन प्रोसेस आ गोटे होची केमिकल करोजन भी अछि जो कि केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इनसाइड द रिवर बॉडी पानी रे डिजॉल्व हे कि किछि बा पानी रे किछि इरोजन हे कि से जगह रो साइज कमे तेनो एई जे खला दिस आर द प्रोसेसेस ऑफ weathering and erosion by the fluvial action of a river तेनो abrasion attrition तापरे गोटे सल्टेशन प्रोसेस माने गोटे जगह उठिबो पड़िबो पुन उठिबो पड़िबो एमती कि भी रॉक मूव करे एंड देन ग्लाइडिंग ऑन द सरफेस क्रिएटिंग द पेबल्स राउंडेड शेप सेमी राउंडेड शेप पेबल्स क्रिएट हुए ए सब जिंस है कि फ्लूवियल माने इरोजनल प्रोसेस विल कंटिन्यू दूसरी की बहुत जगह कोन हेते देखियो गोटे जगह रे रॉक जगह सब हमर फुल हे जेतो रॉक ऊपर जिंदे गोरी की बोले जे तुम भाबे जे जोटी की गोटे जेंती कोन कर देछि रॉक को देखले बहुत जगह देखियो माने देयर यू विल फाइंड इफ यू गो टुवर्ड्स द कपड़ा एंड बियॉन्ड गोटे रॉक एक्सपोज हे रिवर बेड भितरे यू विल सी देयर आर स्पॉट होल्स इनसाइड द रॉक जो पानी रो जो भौरी भौरी भितरे जगह खाई जाईछि एंड कंटीन्यूअसली से जगह ला पर एमती ग्रुप्स हे जाईछि ता भितरे
से जो वर्टेक्स जोटा अछि जो बबल जो एपेक्स जोटा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मूवमेंट जोटे कि रॉक जाके इरोजन हेगी ए टाइप रो कैविटी कर दिए then एमती विभिन्न प्रकार फीचर्स इरोजनल फीचर्स will start developing across the river from the origin point till the river mouth किंतु मैक्सिमम हुए माउंटेन रीच रे जो स्लोप बहुत थाए तापर टिके स्लोप कमी जाए जतो मिडिल रीच को आसे तो मिडिल रीच को आसे स्लोप कमी गले कोन दे that the river water will stop vertical eroding the river it will start lateral movements से कौन करियो ना आ वर्टिकल करे ता इते स्लोप नाही पानी को मोर बेला करी की ए पानी को रैपिडली आसी की तळ वी शेप वैली बेला काटियो पे then तापर कोन हो it will swing towards the bank then is a swinging action of the river water will take place in the middle reach after the hills এই প্রসেসটা কোন হাইড্রোলিক প্রসেস অফ মুভমেন্ট অফ ওয়াটার ইন দ্য রিভার এই যে হাইড্রোলিক প্রসেস রে কোন হবে river valley will be wider আস্তে আস্তে যখন দেখু তো কাজে মহানগর আখি পাউতি 4-5 কিলোমিটার পর্যন্ত ভ্যালি ওয়াইডেন ହେଇଛି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଖାଲି ପାଣି ଯାଉଛି ଖରା ଦିନ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ଇଭେନ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ପାଣି ବହୁତ କମ ଯାଉଛି ବଟ୍ ଦି ଭ୍ୟାଲି ଇଜ ଭେରି ବିଗ that is the optimum when the flood water is coming then এই যে lateral extension of the river valley is a type of erosional process in which the river expands the valley horizontally and laterally आपको एक्सपांड कला पर कोन करे ना दी साइड रे जहा जहा सेडिमेंट्स अछि से जगह सब डिपॉजिट करे ऑन दी साइड्स बोथ दी साइड्स केना पानी जतो बुली की गला किछ मटेरियल ता संगे रे अछि से जगह रे सेटल कर जिवो so this settling of these materials will create leavage तापर डिपोजिशनल फीचर आरंभ होबो इरोजन बेसी प्रिडोमिनेंट थिला इन दी माउंटेन रिच तापर जतो प्लेन एरिया गसला इरोजन और टिके रहला ऑन दी साइड ऑफ द रिवर बैंक्स किंतु तापर डिपोजिशनल प्रोसेस भी आरंभ हो जिवो साइमल्टेनियसली दैट फॉर्मेशन ऑफ लीवेज फॉर्मेशन ऑफ सैंडबार्स फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड्स इनसाइड द रिवर्स ये सब प्रोसेस भी बाय डिपोजिशनल प्रोसेस एंड साइमल्टेनियसली इरोजनल प्रोसेस हो तापर तो मिएंडरिंग करिक चलीबो नई ता भीतर तो मिएंडर बैंड पाखरे गोटे बैंड पाखरे से इरोजन करिवो आ गोटे बैंड पाखरे से डिपोजिशन करिवो गोटे बैंड पाखरे इरोजन करिवो आ गोटे बैंड पाखरे डिपोजिशन करिवो एंड दोस बैंड्स विल गो ऑन शिफ्टिंग आल्सो इन डिफरेंट years depending on the flow of water then it kari kom kare na seta point bar deposit ure create karibo point bar mane note nai bhitor ku basiya pai mane gote nai curve he ki jauchi se curve bhitor eta erosion kala taपर curve ru baharla pare deposition heichi then gote ridge bhela he ki bhitor ku basi asibo flat with the deposition seta misi jibo mainland sagere तापर पुणी नई ऊपर गला पुणी अदर इरोजन करिवो एमते ही की इरोजन डिपोजिशन ए टाइप रे ही की द रिवर विल start forming different type of lateral bars medial bars तापर longitudinal bars transverse bars sandbars है कौन sandbar बोले and islands inside पट्टा जाए कौन so these are the processes simultaneously with deposition एमती है कि मिडिल रिच रे तरह चलिबो द रिवर विल फ्लो टुवर्ड्स आ तापर मिडिल रिच को पहुंचला बेले भी देयर आर फ्रॉम माउंटेन रिच मिडिल रिच आसला बेले वाटरफॉल भी मोले देखा जाए कहीं कि ना द माउंटेन रो तळ को खसे एट सम प्लेसेस वाटरफॉल्स आर क्रिएटेड with the difference between the hard rock and the soft rock and difference between the altitude from which altitude to which altitude the river is flowing ऊपर डिपेंड करेगी हुए then aim the ki the river will move towards the mouth area the mouth area pakku asla below to kon the river will have a lot of water but a lot of sediments also and the river is no more in the capacity to carry those sediments valley both wide he jo pani both ke high depth kamibo pani ro expansion of the lateral valley will be much more development of flood plains will be much more flood plain deposits today are amazing flood plain bhitar deposit are among beyond the river bank पर भी deposition are among casually then the river will start bifurcating क्या तापर कोन हो ना जो सेडिमेंट आस्थिबो से सेडिमेंट जाके गोटे नईर महान पाखरे डिपोजिट हे डिपोजिट हे गेले नईटा दी भाग हे जिवो यदि पानी जाउछि आगु गोटे जगह रे मझिरे यदि कि सेडिमेंट डिपोजिट हे गेला रिवर विल बी diverted in two channels
तार से मझे गोटे आइलैंड हो गला नईटा दी भाग हो पुणी चलला से आइलैंड आस्ते आस्ते बड़ हो पुणी किसी बाट गला नई पुणी मिसी पारे न मिसी भी पारे जदि मिसिला पुणी आउ थे आउ टे आगे गला पुणी आउ थे डिपोजिट हम पुणी आउ थे बाइफर्केट हम तो ये जो टाइप प्रोसेस हम ये प्रोसेस कहते आम ब्रीडिंग स्ट्रीम प्रोसेस ब्रीडिंग स्ट्रीम प्रोसेस इंडिकेट करे गोटे रिवर इज नाउ कमिंग टुवर्ड्स एन वेरी old age of the situation नई तार old age पाखापाखि आसुची very close to that time where it is developing such kind of features. The river valley is not capable of carrying the sediments, so whatever the water is coming with the sediment. The sediment, the pani asse, the pani, the sediment को carry करिया पे तब अगर strength of power नहीं, तो से deposition करे, तो river bed जाके पोती हुए, तो sand, तब ये जो sand deposits रहे भी नई भीतरे, so you will find coarse sand, some are fine sand, some are pebbles, some are gravels, some are boulders. This was along the river valley. So that will also indicate what is the stage of the river, where is this river is. That characterization was done about the river course stage. Characterization. So like this, we will have erosional processes and transportational processes and depositional processes. So depositional doubt thila. Ko. Sir, braided river or river piracy, dita pakhawi concept same to na? नहीं रिवर पायरेसी है कौन मनेकर गोटे जगह रे गोटे पहाड़ अछि पहाड़ रो गोटे कोड रो गोटे नई बाछि आ गोटे कोड रो गोटे नई बाछि से सेपटू जाउछि ए पटू जाउछि हैला अच्छा इन कोर्स ऑफ टाइम कोन हुए नईटा कोन करे ना सब बेले तार हेडवर्ड इरोजन करे जो टू ओरिजिन हेछि से ओरिजिन बाकी सब बेले पछु पछु जाय भांगी भांगी जाय रक्त भांगी भांगी कि एमदी गला बेले जदि आर पटू पहुंची गला सेपटर नई संगे मिसी गला ताहले कोन हो गोटे स्टेज हो जोटे कि दीटा के नई मिसी गोटे साइड को फ्लो करियो किबा गोटे नई रो गोटे पोर्शन नई भीतर को पळे आसीबो सर ताकू कह जाय रिवर पायरेसी बोले माने वन रिवर इज कैचिंग अनदर रिवर टू इट्स कैप्चर रिवर भी जोटा कह जाय एटा रिवर कैप्चर कह जाय रिवर पायरेसी कह जाय किंतु ब्रीडिंग स्ट्रीम हला द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द वैली river with creation of distributaries joining together again and again creating distributaries again joining together जेमते हमर कटक रे हेछि बळासी मिलवा खाई औसे ए दीटा के मागे की जाइछन गला पर से बळासी मो जाइछि किछि बाट गला पर से दीटा के मिसि जाइछन पुणी मिसिला पर ता पर पुणी डिवाइड हेछन डिवाइड हेला पर ता भीतर 22 मो जाइछि ओके 22टा गां से 22टा गां से 22टा गां अछि तापर पुणी से मिस जाइछन पुणी अदर माछगा मागरे गोटे आइलैंड सृष्टि करछन आइलैंड सृष्टि कर सारी पुणी अदर मिस जाइछन मिस जाई तापर जाई अस्त्रम पाखरे पड़ी जी ए जो टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर इंडिकेट्स दैट रिवर इज नॉट in a position to carry the sediments amount of sediment which is being brought by the river to the destination जति सेडिमेंट आसे सब जगह सेडिमेंट नहीं कि डेस्टिनेशन ले पहुंच पारनी सो बाटरे जाके डिपोजिट होगा बाध्य होउछ and this is creating so this is what is called as a very old age characteristic of a river old age characteristic of manifestation that is not related to this youth versus old age सेटा इकरा कहूनी एटा हला माने characterization of the river valley तेणु एमती तेणु एइथिरे कोन हुए ना when the river is cutting across the land गोटे सरफेस ऊपर देखि नई जतोल जाई दी कोडरे रिवर एम्बैंकमेंट अछि सेइथिरे जणा पड़े तार दी साइड को कहंदी टेरेस the terrace of the river a terrace of the river the structural terrace ki it is a pair terrace ki one side terrace अछि ki the side terrace अछि एमती भी बेले बेले हेई पारे गोटे साइड स्टीप माउंटेन अछि आ गोटे साइड स्टेप बेला टेरेस अछि एमती भी हेई पारे आ बेले बेले कोन हेई पारे दी साइड रे टेरेस गोटे स्टेप बेला टेरेस हेई पारे नई ता भीतर चलछि एमती भी हेई पारे दीटा को एमती रही छि टेरेस नई किंतु ता भीतर चलछि एमती भी स्टेज हेई पारे so each second that indicates the characterization of the river in the geological origin of तार केमती भाबरे से origin हेई जाई जेमती हमर एठी गोटे इंडिकेशन तमे देखिबो हमर सातकोसिया गॉड्स पाखरे the river is
cutting the mountain in a very steep slope, creating a gorge. Gote gorge la kon? It is a V-shaped parallel valley of very high depth, maybe a V-shape or maybe a parallel shape valley, closely between two mountains. The mountain mitra dekhi possibly jaଉଛି with very steep depth. ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ ନଈରେ କେମିତି ଆସିବ, ହାଉ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାପନ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ we try to understand that ଯଦି normal if we believe that there is a mountain and a river is coming towards the mountain, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମାଉଣ୍ଟେନ କୁ ନଈଟା କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦି ସାଇଡରେ ସେ ବୁଲିଯିବ, ଯୁଆଡକୁ ସ୍ଲୋପ ଅଛି ସିଆଡକୁ ବୁଲିଯିବ, କାରଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବେରିୟର ହେଇଗଲା ଦେଖ ମାଉଣ୍ଟେନ। It will not be able to cut the mountain to emerge on the other side. ए माउंटेन रो अदर साइड को आसिया पई ताको जो कट करिया पड़िबो से जिनसरा से करि परिबो कारण से तो बुली जीवो। द एनर्जी विल बी यूज्ड टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड सेडिमेंट्स by turning their course. किंतु हमर सिटी कोन होई छी, इट हैज बीन एबल टू कट द वैली कारण हमर जो सतकोसिया माउंटेन रही छी, सतकोसिया माउंटेन देखियो दी साइड रे ओटे स्टीप माउंटेन हेगी रही छ, ता भीतर वैलीटा रही छी 7 पाखा पाखी 10 ରୁ 12 किलो 14 किलोमीटर पर्यंत, and this side there is a steep mountain. तो तब दिस आकाश रो देखिबो जदी से जगह को ताले लागिबो जेमि गोटे माउंटेन भितरे से माने पसी की बाहर छी नईटा गोटे फ्लैट दिस साइड रे the hill is absolutely parallel on the both the sides of the river bank. अब जब पानी बहुत आसे से तब पानी बहुत ऊंचा हुई, जब पानी न थाए टिके कम देखा जाए, तो हमें साधारणतः तो नॉर्मली जनरल लोक माने देखंती जब पानी न थाए, किंतु जो माने पाखे थांती फ्लड बेले देखि जंती how the water level rises in the gorge and man जो पर्यंत माउंटेन अछि से माउंटेन रो टॉप पर्यंत बेले बेले टच करिछि because of the very high discharge of water. हमर तो 1985 फ्लड्स हेतला से समय रे the water has started entering into टिकरपड़ा गाम में पहुंच जायतला, इते हाइट रो पानी आस्तला, the embankment cross करिकि तार बैंक क्रॉस करिकि आसीतला with a depth of more than 200 feet height. Then it depends upon how much of water is being coming in the river valley. किंतु जदि माउंटेन टा परे हुए मन के रिवर आगुरु अछि से जगह रे, बट द माउंटेन इज राइजिंग वेरी स्लोली, ताले कोन हबो ना जोठी उठिबो माउंटेन टा से जगह रे, बिकॉज़ द रिवर इज अर्लियर एक्जिस्टिंग, द रिवर विल कंटिन्यू इट्स फोर्स ऑफ इरोजन एंड द माउंटेन विल बी इरोडेड से जगह रे, तेनो माउंटेन टा ऊपर को उठिबो मझिरे से जगह टा कट हेकी रहि जिवो. So that is an indication of an antecedent river. Antecedent river means the river is older than the mountain. Then ये जकला हमर सब morphological evidences to study माने कोटा आगो हेची कोटा पछ हेची जियोलॉजिकली तार कैरेक्टराइजेशन कोन केते वर्ष तलर लैंडस्केप ए सब जिनस का तार रॉक रो एज ऑफ द रॉक को स्टडी करले people try to ascertain the geological history and the stratigraphic history of the rocks. Then E type of indications so मिले, so that is how fluvial erosion, fluvial deposition and fluvial landforms, regional landforms and divisional landforms indicate different type of features. ता भीतर भी हमें इन जिनसे को नहीं कि हमें भी हमें रॉक मटेरियल यूज करते, सैंड यूज करते, कोटी कोर्स सैंड आसुची, कोटी फाइन सैंड आसुची, कांग से जगह आसुची फाइन सैंड, कांग कोटी जगह रे कोर्स सैंड आसुची रिवर बेड रे, आगो जगह रे पेबल कांग आसुची. So all these things will indicate the nature of the river and its catchment area. Who area se asuchi, kon nei asuchi, so achi. So quite a lot of things of interest are there in the fluvial landform studies. It is not just a study of the morphology of the shape of the features, but it is intricately related to the human economic and adaptation process of living with the river. Then ये सब जिनसे को indicate करे. So you will be knowing all those things in your study materials. तापर written नला Eulian process and landforms. A Eulian process and landforms रे हुए कौन? What is happening? Eulian process operates in the areas of dry land and deserts. Dry land और desert ये दीटा जगह रे a Eulian process देखा जाए, जो ठीक ही water dominance is less, air dominance is high. पवन बहुत जोर हुए और
पानी रो amount बहुत कम. So the landforms actually take the shape of origin with the wind. Wind रो force रे जहाँ किसी change हुए से जगह रे तब sea process रे the landforms are created. Then तब जो एक desert भीतर को possible if you enter into a desert, you will find there are two types of deserts. ଗୋଟେ ହେଲା rocky desert, ଗୋଟେ ହେଲା sandy desert. rocky desert ଟା କହନ୍ତି ରେଗ୍ ବୋଲି REG. sandy desert ଟା ଗଲା ERG. ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଜର୍ଟ କୁ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଜୟପୁର ସାଇଡ୍ ରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଜର୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବ ଇନିସିଆଲି ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ରକି ଡେଜର୍ଟ ଉଦୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକି ଡେଜର୍ଟ ଠାଏ ଠାଏ ପଥର ମାଉଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ରେ ଖାଲି ଆମର ଯେମିତି ପାହାଡ ଅଛି ସେମିତି ପାହାଡ ଆଉ ଅଣ୍ଡୁଲେଟିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାରେନ୍ ରକ୍ସ ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ବୁଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଏ ରକି ଡେଜର୍ଟ. କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟସାଲମେର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ କି ବିକାନେର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ and beyond that you will find that land is not available visible and it is only visible the sand deposits in the form of sand dunes. ତାପରେ ଦେଖିବ ଖାଲି sand dunes ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟ ତମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବ if you are entering into this area even by train ତମ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ତମର ଯେତିକି ବାଲି ପଶିଥିବ ତମେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଉଦୟପୁରରୁ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ you will find a lot of sand deposit inside your train bogies also. ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ବି you will find the same situation because wind is very predominant over those areas. କାହିଁକି ହୁଏ କାହିଁକିନା during the day time heating takes place and very low pressure develops and the wind movement becomes very fast. ରାତିରେ ସେମିତି କୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ କୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ନେବରିଂ ଏରିଆ ପୁଣି ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରିଲେଟିଭଲି ଲେସ୍ ଦିନ ବେଳା କିନ୍ତୁ the wind force is very high. There is a lot of sand materials are moving across the desert. Desert dust today, that it becomes very difficult for you to resist that. This situation. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି they have adjusted in their way of living but wind erosion is a predominant action in the desert areas. For desert କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ଇଥିଓପିଆ ପାଖରୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ଯଦି ଯିବ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରୁ you will find the rocky desert. ଯେତେବେଳେ ଲିବିଆନ ସାଇଡ୍ କୁ ଯିବ you will find the sandy desert. then is rocky desert ବା sandy desert ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୁଏ. sandy desert ରେ wind will be blowing the sand depositing it and creating different type of features. ଆଉ ଯଦି କିଛି ହାର୍ଡ ରକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ହାର୍ଡ ରକ୍ ଯାକ ବି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ର ଫୋର୍ସ ରେ ଯୋଉ ତକ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉଥିବ ତା ଦେହରେ ବାଡେଇ ହେଇକି ସେ ଯାକ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇରୋଜନ ହେଇକି ପେଡେଷ୍ଟ୍ରାଲ ରକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ତଳ ବେସ୍ ଟା ତାର ଇରୋଜନ ହେଇ ପଳେଇଥିବ ଉପରଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଛତୁ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ ତାକୁ ପେଡେଷ୍ଟ୍ରାଲ ରକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି. ଏମିତି ଜିଉଜେନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ଲକ ଅଫ ରକ୍ ଅଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇଯାଇଥିବ ଏ ୱିଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ରେ ଇରୋଜନ ହେଇକି depending on the strength of the rock along the different layers. Then the wind will create a number of processes, a number of features inside the desert by making erosion with the strong wind blowing over the desert. Then see the process टाइप हमें कहूँ कौन? Again, the process is known as abrasion, process is known as attrition, process is known as deflation, process is known as saltation. ये सब प्रोसेस जाक एठी भी चले सेठी पानी भीतर चले एठी पानी बाहर चले but the process remains same. Materials also move with the wind and they create landforms of different types. Then ये जो different type भीतर कौन हुए the rocky desert अच्छी ताले से rocky desert जगह आस्ते आस्ते कौन होना erosion हैगी either sand deposits हैगी कि मैं rocky desert जगह आस्ते आस्ते erosion हैगी fragmented rocks वगैरह deposit हैगी it will create a rock floor plane. ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ରକ୍ ଯାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିକି ଗୋଟେ ରକ୍ ଫ୍ଲୋର ପ୍ଲେନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ଭଙ୍ଗା ରକ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ରହିଛି ଖାଲି ବ୍ରୋକେନ୍ ରକ୍ସ. ଦେନ୍ ଏଇ ଯାକୁ କହନ୍ତି ସେମାନେ they call it as pediments ବା ପିଡମେଣ୍ଟ ଏରିଆସ୍ ବା ପେଡିମେଣ୍ଟସ୍. ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସେଟା ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ ଆକାରର ହେଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଲା and then they are also known as bajadas. ଏମିତି ହେଇକି there are different names that you will come across with pictures you will see that how things are happening inside the desert and how the hard rocks are getting eroded and again materials are deposited in the sandy areas
and then dune way, sand dunes way. So sand dunes that is a unique type of sand dunes. Each sand dune they are parallel to the wind direction. Each sand dune se arc shape Barkhans. The Barkhan is sand dune that gives a protection to these people who are moving with the flocks of sheep and camels. Then the Barkhan jacket kon hita hai, arc shape sand deposit hita hai, sand dune semti hita hai, जोटा तार क्रेस्ट थाए से क्रेस्ट बहुत ऊंचा होता है और जो साइड रो पवन आसे से साइड रे स्लोप टा टिके जेंटल होता है और जो साइड रे न थाए से साइड टा स्टीप होता है दिस इज स्टीप साइड रे प्रोटेक्शन नियंती लोक माने विथ देयर फ्लॉक्स ऑफ sheep and camels during the very strong wind movement and transportation of sand in the desert. क्या बहुत जोर है तो विंड आसीबो जन बादी जोर रे बाडे हम से समय से मूवमेंट वेरी डिफिकल्ट हुए. They take shelter inside. So Barkhans are a type of dunes which supports their day-to-day activities in finding shelter in the mid of the deserts. See, that is a type of sand dune. There are arcs separate sand dunes. There longitudinal sand dunes, transverse sand dunes, different type of mount type of sand dunes. There are varieties of sand dunes, and that also we see in the coastal area. We will see that बहुत बड़ा आकार देखा जाए huge in size. Then that is what is the Aeolian transportation and then deposition and sedimentation and formation of different type of erosional landforms and depositional landforms. बेले बेले desert रे कौन हुए वर्षा हुए जितने बड़े वर्षा हुए से तो there is a peculiar features are created in the desert. Desert भीतर कौन होता है नई न था there is no river because जदि river अच्छी से जगह वर्षा दिन पड़ेगा परे संगे संगे कुत्ते जो पवन रे बाली उड़ी की कुत्ते you will not find any evidence of a river existing in a particular place because the wind will be completely deposited over the valley and will burying the valley. देखा जीवन से जाना पड़ेगा जितने बड़े वर्षा आसीबो से कोन हो जो पटे स्लोप अछि the water will flow in that direction accumulate हबो overland flow एक ही गोटे डायरेक्शन में मूव करिवो it will create a channel. तेणु ये जो चैनल जाक हबो से कहते इफेमेरल स्ट्रीम्स हम पढ़ी ना perennial streams non perennial streams आ गोटे हला इफेमेरल स्ट्रीम्स जो डेजर्ट भीतर जो जाक एमती ऑल ऑफ अ सडन उभा हुए तापर पुनी डिसअपियर कर जाए ताके कहते इफेमेरल स्ट्रीम्स. They will start opening up when the rain comes with a very small amount of rain. Whatever the rain will be collected, that will be pushing through a channel along the slope and create a stream that is known as ephemeral stream. अब ई नई जगह डेजर्ट भीतर जगह बाहर से जगह साधारणतः बहुत दूर को जाई पारेनी तेणु से डेजर्ट भीतर जोटा लो लाइंग एरिया था से जगह जगह पड़े तेणु समुद्र पर्यंत जीवार ये नई जगह स्कोप न था तेणु most of the deserts are called as inland drainage systems से जगह डेवलप करे ଆଉ ସେକି ସେ ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ କୋ ଲେକ୍ ରେ କୋ ପଣ୍ଡ ରେ କୋ लो लाइंग एरिया रे नैतक पड़िथियो किबा कोनसे गोटे जगह लो लाइंग फ्लैट एरिया अछि जे जगह रे पड़िथियो इन कोर्स ऑफ टाइम से जगह रे जो सेडिमेंट जाई पड़े पाइबी फ्लूवियल वाटर मूवमेंट इन द डेजर्ट्स ग्रेजुअल डिपॉजिट हेगी बेले बेले रॉक सॉल्ट फॉर्मेशन हुए इन कोर्स ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम रॉक सॉल्ट हुए आ बेले बेले जदी फाइन डस्ट पार्टिकल्स जाई डिपॉजिट हुए like Lewis, से जगह हमारा gypsum deposits हुए. So these are some of the types of materials which are emerging from the desert. The landscape is the outcome of the enrichment of different type of particles in the deserts. So तारा utilization भी अच्छी खाली तमें theoretically पढ़ने तारा shape कौन होती है कौन होती है but each and everything of this desert has some bearing on the human habitation, human economic welfare, human settlements, oasis formation, ये सब जिनसे टिके relation अच्छी. So you will be knowing these Aeolian processes and landforms in this unit. Then major जिनसे रहुजी तुम्हारो जैसा कुछ के simplify करियो चेष्टा करियो ये सब जगह agent fluvial erosion or Aeolian agents or Aeolian landforms or fluvial landforms or glacial landforms or coastal landforms or karst landforms जहाँ भी हो सब जगह तीनटा जिनस इन्वॉल्व होची गोटे ला प्रोसेसेस गोटे ला associated with the agents process agents and processes
आ गोटे पार्ट हला हमर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, आ गोटे पार्ट हला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, आ गोटे पार्ट हला एट द एंड ऑफ द थिंग्स व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। गोटे डेजर्ट रे जदी प्रोसेस कंटिन्यू करे आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम it will form a जेमते हमरो गोटे कोस्टल एरिया रे बा गोटे रिवर बेसिन टा गोटे फॉर्म प्लेन लैंड हे जीवो लास्ट को दैट इज कॉल्ड एज पेनिप्लेन बोली कुआ जाछि। सेमती गोटे डेजर्ट जदि से प्लेन क्रिएट हो दैट मे बी undulating plain with rock broken rock fragments distributed here and there देखा जाउथो पाखा पाखी सेम हाइट रो अटक कहंती पेडी प्लेन्स। So that is what is also called as peneplains. Fluvial system is called as peneplains. Then प्रति जिंस गोटे end landscape अच्छी जो end landscape टा कि that is the characterization of a particular erosion system. तो ये जिंस को सो तो इन द चारिटा कंपोनेंट सब लैंडफॉर्म सहित एसोसिएटेड है कि रहिबो तम अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू कैप्चर दिस। तापर आसला कास्ट प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। कास्ट प्रोसेस माने द प्रोसेस व्हिच इज रिलेटेड टू अंडरग्राउंड वाटर पर्कुलेशन, channeling, erosion and deposition, and creation of different type of features associated with limestone rocks. The limestone rock रही थी जगह रे ये कास्ट लैंडफॉर्म साधारणतः डेवलप करे कहीं ना का लाइमस्टोन रही थी रॉक रे वाटर जतोले आसे कि वर्षा है कि पानी जतोले पास करे तो देयर इज इरोजन, केमिकल इरोजन। वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स ए वीक कार्बनिक एसिड। से कार्बनिक एसिड टा कोन करे लाइमस्टोन को खाए, लाइमस्टोन को माने ये करे वेदरिंग कराए, केमिकल वेदरिंग कराए और केमिकल वेदरिंग करके आस्ते आस्ते इट क्रिएट्स इट्स ओन चैनल्स ऑफ पैसेज फॉर द वाटर टू गो। जो जगह से तो लाइमस्टोन का डिपॉजिट डिसॉल्व हो जिवो it will be converted calcium carbonate will be converted into calcium bicarbonate. It will move in a dissolved form in water. पानी सहित से बाइकार्बोनेट है कि पानी रे मिसी कि आस्ते आस्ते पानी फ्लो करिवो। जतरे सुपर सैचुरेशन है जिवो द कैल्शियम बाइकार्बोनेट विल स्टार्ट अगेन सब्लिमेटिंग ता भितरु डिपॉजिट होबा आरंभ करिवो। देन दिस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एसोसिएटेड वेदरिंग एंड इरोजन creates a variety of landforms which are unique to the limestone topography. तो आपको limestone topography बोले कहा जाए, karst topography भी कहा जाए, limestone topography processes and landforms और karst topography processes and landforms। ଆଉ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ରକ୍ସ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟିକେ ସେମି ଏରିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରିଭେଲ୍ କରୁଥିବ। କାରଣ ବହୁତ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୋଇକି ପଳେଇବ, କିଛି ହବନି, ନଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ରେଷ୍ଟ। କାରଣ ସେ डिपोजिशन जाके तो से वाश आउट हो जिवो। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେମି ଏରିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ then the conditions of erosion will take place and deposition ହବ। ତାପରେ ପାଣି ନଥିବ ତେଣୁ डिपोजिशन प्रोसेस ରେ ରହିଗଲା। तापर पुणी आउथरे तळे वर्षा हबो, पुणी इरोजन हबो and then again there will be deposition at some places, so water will be percolating inside the limestone। yes को कहबो किछि okay। So the karst landforms or the limestone landforms, where are these areas found? हमरो इंडिया रे जिनसे जाको साधारणतः देखा जाए ये चंबल वैली एरिया रे देखा जाए। there is a lot of karst landforms which are produced in the चंबल वैली। किछिटा अछि हमरो एठी नॉर्थ ईस्ट रे हमर मेघालय रे के जगह रे जोटी लाइमस्टोन अछि से जगह रे हिची आउ के जगह रे हिची हमरो जोटा कि पास्ट क्लाइमेट जो हिची हमरो बोरा केव्स इन आंध्र प्रदेश से जगह रे किछिटा हमरो भी हिची एठी कोरापुट रे जो गुप्तेश्वर केव्स से जगह रे हिची एमती बहुत जगह रे ए टाइप रो वेस्टर्न घाट रे के जगह रे अछि। so there are distribution so the world level रे देखिबा ताले बहुत गुडे ए जिंस इन वेरी लार्ज स्केल you will find in ईस्टर्न यूरोप रे हमर देखिया को मिले जगह से कृष्ण सागर पाखा पाखी मेडिटेरियन सी पाखा पाखी जो कंट्री जगह से से कंट्री जगह से देखा जाए बहुत बेसी। तेनु ई जो प्रोसेस रे कोन हुए ना लाइमस्टोन रॉक ऊपर तो पानी पड़े, पानी तक इरोजन करिकी कोन करे ना जोटे कैविटी तैयारी करे, कैविटी से कैविटी भीतर देकी पानी तक आस्ते आस्ते पर्कुलेट करिया को चेष्टा करे, इरोजन करिया को चेष्टा करे और से कैविटी टाको भीतर बढ़ाए। से ऊपर को बढ़िबनी, से भीतर इरोजन करिवो पानी कारण पानी रो टेंडेंसी ला भीतर को जीवा एंड भीतर को गला पुणी इरोजन कला पुणी भीतर गला पुणी इरोजन कला एमती कि इट विल क्रिएट चैनल्स इनसाइड द रॉक।
along the cracks and joints of the limestone. ता भितर से red hole कला बड़ा, the water will percolate through and start weathering in erosion, create the valleys inside. Then याको विभिन्न प्रकार नाम दिया है जी, with different names. Cast holes, sink holes, याको sink hole को आजे, cast holes को आजे, जब बहुत बड़ा ला तक उभाला को आजे, एमती विभिन्न प्रकार नेम nomenclatures अच्छी, ते nomenclatures जाकर related to the different type of formation on the surface. कारण गोटे surface रे गोटे outlet रहेगा जो outlet through रे पानी भीतर भी जीवो, आसे outlet टा बेले बड़ा है कि बहुत बड़ा भी है जाता है, pond बेले है जाता है, आ बेले narrow है कि था है, किंतु तो भीतर percolate करे, it creates the channels and then erosion takes place in between and creates caves, cave create करे, तापर cave भीतर पुनी जो percolate करे पानी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट परकुलेट करतो से सुपर सैचुरेशन है कि ड्राई जते बेले हुए के भीतर जते ड्राई हबो तळे जागा it will fall down from the roof of the cave and will create pillar like structures within the cave जागा हम कहू stalactite बोले छात ऊपर तळ गुलंबी थिबो कि बेले बेले तळ ऊपर जाइथिबो तो से जो stalactite and stalagmites कह जाए there are different type of pillar वाला structure है कि ଗୋଟେ cave जागा देखा जाए रहिथिबो e type of situations and then formation of cast holes, different type of cast forms of the tunnels, subterranean forms जोटा कि माने माटी भितर कोन से करता है जेंति हुई उनका जेंति भीतर जाई थे ये सेमती गोटे टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स क्रिएट करन एंड ताकू भी सेमती हमर ये जो प्रति माने लैंडस्केप रे ट्रिवियल लैंडस्केप कास्ट लैंडस्केप रे हम कांसेप्ट ऑफ साइक्लो इरोजन भी यूज होछि that you can use this concept of cycle of erosion to explain that these are the youth features of the landscape, these are the mature features of the landscape, these are the old features of the landscape. MGB, that is how the Davis has started claiming that yes, cycle of erosion can operate in any of the landforms because these are the climatic accidents of replacing water with different agents. Through the cycle of erosion call, he gave the name as normal cycle of erosion. Considering that Earth is comprising of 70% of the land area affected by the running water and rivers. Then landscaping way by the rivers maximum. Then a normal cycle of erosion is supposed to operate. In the duty normal cycle operate karuni, glacier it is a climatic accident. So climate change is then pani glacier so glacier will have its own features of youth and old age. I would have माने limestone rock भितरे it is a acidified water that is creating different type of landscape in the karst landforms and karst landscape. So that is what is also cycle of erosion with the initial stage of landforms, mature stage of landforms, and the old age of landforms. And the explanation is so that also you can use. जदि परीक्षा रे सेमती क्वेश्चन पडिबो अदरवाइज जदि खाली क्वेश्चन बेयर क्वेश्चन पडे landforms and the processes ताल खाली landform process लिखियो cycle of erosion लिखियो दरकार जदि पडला describe the karst cycle of erosion and evolution of landforms ताहले एठी लिखियो पडिबो कोन cycle of erosion केमि एठी ऑपरेट करूची and landform केमि करूची that is the difference. जे तापर glacial processes and landforms. Glacial process of landforms रे ice and glaciation and the geological past theories of glaciation amaro glaciation केबे केबे हेछि जार के एविडेंस वर्तमान मिलुछि over the earth surface. Glaciation जे समय हेछि से समय कोन हेछि ना climate has changed and climate change है कि ओटे cool climate हे जाय छै earth रे cool climate हेबा जो कोन हेछि ना major part of the polar areas have ice से ice जगह extend करी करी tropic पंथ पळे आसे tropic of cancer tropic of capricorn पंथ polar area रे extend हेई पळे आसे मतलब से कोन आर्कटिक सर्कल पाखरे एंटार्कटिक सर्कल पाखरे रहउछि किंतु सेते बेले आइस एज बेले से पर्यंत पळे आसे कारण बिकॉज़ द अर्थ इज गोइंग थ्रू ए कोल्ड फेज तेणु एई समय कोन हुए ना जो एरिया जाके वर्तमान एक्सपोज हेछि से एरिया जाके वर्तमान आइस पळे आसला परे आइस डोमिनेटेड फ्रॉम क्रिएट हबो तापर जेतोले पुणी गोटे वार्म स्टेज आसीबो से जाके आइस मेल्ट कर जिवो those areas under ice will be exposed down तो से एक्सपोज होला पर वर्तमान देखा जिवो से जगह ग्लेशियर लैंडस्केप जा हेछि
से जगह देखाଯିବ तापर पुणी बर्तन फ्लुवियल एक्शन आरंभ हो तेणु एमती इट विल क्रिएट ए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप तेणु आम ग्लासीयर सहित रिलेटेड किसीटा जिनस थ्योरीज ऑफ ग्लासिएशन कहीं ग्लासिएशन हुए केबे केबे हेइतला हमर टर्शियर एरिया रे 4 थर हेइची तार नाला रूस रिस गुन्स मिंडल आ गोटे कोन चारिटा अछि ओन in charita phase of glaciation has passed over during the last 10 million years 10 million वर्ष भितर चारिटा phase of glaciation जाइछि तेणु एबी जो वार्मिंग फेज चली वार्मिंग फेज पर हुए तो Earth may experience another stage of glaciation. That is also the scientists are expecting. The warming chali तेणु तार वर्तमान इंडिकेशन रिसर्च की मिलिनी but the historical evidence says that yes every warming phase is followed by a cold phase a glaciation phase. Okay. तेणु एमती हेछि तेणु टाइप्स ऑफ ग्लासियर्स रे हम कोन छै ना हम ग्लासियर कोन ग्लासियर इज ए मास ऑफ आइस इन ए मूविंग कंडीशन अंडर द स्लोप एंड ग्रेविटी जोठी गोटे मास ऑफ आइस ग्रेविटी रो स्लोप एक्जिस्टिंग स्लोप एंड ग्रेविटी रे तळको खसिबा आरंभ करे आफ्टर कंपाइलेशन एंड पाइलिंग ऑफ इन ए पर्टिकुलर स्लोप न ता स्लोप को नेकी जति की अमाउंट ऑफ आइस पड़ले से खसिबा आरंभ करियो दैट इज व्हाट इज ए ग्लासियर एंड दैट ग्लासियर स्टार्ट्स मूविंग as a mass sliding at the rate of गोटे सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एमती मूव करे नॉट दैट इट मूव्स वेरी फास्ट क्या बहुत गुडे एरिया स्नोफॉल हो जाते ग्लेशियर जगह बहुत बड़ हो जाए तेरे सब जगह स्लोप समान कंडीसिव रहन जे खाली खसियो गोटे जगह खसला बेलको गोटे जगह अटकी रह जिवो किछटा बैरियर भी थिबो तो ताको ओवरकम करिया पड़ियो तो एमती है कि द स्पीड इज नॉट वेरी फास्ट तो एमती है कि हमर जो ग्लेशियर्स अछि मास ऑफ आइस इन ए मूविंग स्टेट ताको कैटेगराइजेशन करा हिसी हमर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स माउंटेन ग्लेशियर्स कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जाको बोले कोनती पेरीग्लेशियल कंडीशंस वन परमानेंट ग्लेशियर वाला से काम करे माउंटेन ग्लेशियर्स आर द ग्लेशियर्स हमर गंगोत्री ग्लेशियर तापर जेमू ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जाको द माउंटेन ग्लेशियर्स दे डिसेंड slowly on the mountain slope continental glaciers they move at a very slow rate with the वर्ष गोटे सेंटीमीटर हे पारे and it is a huge scale in a huge scale that changes the entire landscape then amar bartan Ukraine is a plain area because of the continental glaciation of the Siberian region ro glaciation heitla sei samare glaciers jako ei porjont astala तापर ग्लासियर जते मेल्ट करे से कोन करे जो पर्यंत जाइछि से जगह मेल्ट करिवो से जगह मेल्ट करे मेल्ट वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द ग्लासियर downwards so see melt water kon karibo they will carry all the sediments which are hidden inside the glacier kana ice सहित जो rock fragmented material सब जगह एकडी हेगी टाइट हेगी रहि जेतिबो मेल्ट करिवो से रॉक जगह ता भीतर बाहरिवो से सेडिमेंट जगह ता भीतर बाहरिवो they will slowly move away तो सी जत्र मूव अवे करिवो देन कोर सेडिमेंट जगह रहि जिवो फाइन सेडिमेंट जगह आस्ते आस्ते तळु जिवो तो एंती हेगी दिस यूक्रेन प्लेन्स have been created, Russian plains have been created because of this situation. Great plains of US have been created because of that glaciation. And Siberian plains are created because of the glaciation also. There are continental glaciers and mountain glaciers. The continental glaciers are associated with periglacial landscape. Mountain glaciers are mountain terrain they operate and creates landforms. Then ये glaciers mountain glaciers agar kon hui landforms are produced of a different type than the continental glaciers एठी kon hui तब देखियो mountain glacier रे प्रथम mountain peak पाखरे देखियो you will find the peak is isolated तार surrounding रे किछि नथिबो एटा amphitheater type रो बेसिन थिबो एवरेस्ट को तो मार्क करथियो कांचनजंगा को मार्क करथियो देखियो मझिर गोटे पीक हे जायछि तापर तार सराउंडिंग रे ओडा amphitheater बेसिन वाला थिबो जोटे कि माने तुम बसि बेला बेला लागुतो सेफ्टी जिम लागुतो से जगह इरोजन हे जायछि ग्लेशियर एठी खसी आछि कारण से स्टीप स्लोप रे रहि पाते जति के रहबा कथा रहै छै तार रहि नथि का से खसी आछि जेन ई टाइप रो से जे कोनती ग्लेशियल स्नोउट्स ग्लेशियल हॉर्न्स और ग्लेशियल neko kondi glacial
ग्लेशियल हॉर्न्स गुड़े क्रिएट हुए एमती हेकी तापर बेसिन्स एम्फीथिएटर बेसिन्स गुड़े क्रिएट हुए तापर विभिन्न हाइट रे ग्लेशियर जाक खसिकी गोटे हाइट रा गोटे हाइट को आसिकी पड़े से जाक कहते हमर हैंगिंग वैली ग्लेशियर्स ऑफ हैंगिंग वैली सी गोटे टाइप रो कोन करे ना हैंगिंग वैली से तोड़े प्रोसेस रे ग्लेशियर तक मूव करे glaciers descending from a high altitude to a low altitude go with the damping action and the flow and creates depression जो डिप्रेशन जगह पानी आइस रही था तो अगर मेल्ट कला पर से लेक रे कन्वर्ट हुए इन कोर्स ऑफ टाइम जेनो हमर जो ऊपर रहला हॉर्न तार चारिकट जो एम्फीथिएटर रहला त कोने सर्क तापर ता तळ जो रहला हमर मैटर हॉर्न बोल तक कहते बड़ बड़ जो जाको स्टीफ हॉर्न्स मैटर हॉर्न बोली कहै जाय तापर ता तळ को असला पर हैंगिंग वैलीज पर you will find the series of lakes glacial damming lakes will तक कहै जाय so it is like erosional feature sark is erosional feature the snout or the horn is erosional feature and ये तळगु से तळ आसीबो when it will cross the snow line तळगु क्रॉस कला पर देखो आसीबो आ तळगु आसुतो से समय कोन करे दी साइड रे जो जगह सब रॉक मटेरियल्स अछि ते जगह सब बरी हि जो स्नो रे दी साइड रे जो जगह अछि से जगह ता साइड रे माने पैक हि जिवो एंड दे विल स्लाइड डाउन तन ये जतो मेल्ट करिवो कोन हो ना से कॉर्डर जति जगह गोटे रीज भला हि रहि जिवो मझिरे जति थियो से गोटे रीज हि रहि जिवो और दी कॉर्डर एक कॉर्डर जा से गोटे रीज हि जिवो और तापर मझिरे ठाय जो मटेरियल सब थिबो ग्लेशियर भीतर ग्लेशियर मेल्ट करिला पर स्नो पड़ेला पर से ठाय डिपोजिट हि जिवो याकू कहती बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी का ए जगह हला कोन ना गोटे एग भला देखिया कि द लैंडस्केप क्रिएट हेता है इने area where the glacier starts moving glacier जोटी जो जगह डोमिनेट हेगी थाए जण द बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी तार इंडिविजुअल फीचर ना जगह को जाय के जगह ड्रमलिन्स को जाय के जगह एस्कर्स को जाय हॉगबैक स्ट्रक्चर्स को जाय इन विभिन्न प्रकार glacial depositional features created moraines को जाय जगह दी साइड रे हुए मझरे हुए एक मोरेन डिपोजिट्स को जाय तापर जो ग्लेशियर मेल्ट करके पानी जगह होय से ग्लेशियल मेल्ट वाटर सिस्टम बा टिल्स से जगह फॉर्मेशन करे टिल ग्लेशियल टिल बोल जगह जो प्लेन फॉर्मेशन हुए बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ मटेरियल्स टेकन अवे फ्रॉम द ग्लेशियर बाय द मेल्ट वाटर जगह बहिबो से समय ये हुए डिपोजिशन हुए से जगह ग्लेशियल टिल प्लेन्स okay then empty there are glacial erosion there are deposition landforms of mountain glaciers continental glaciers that are asibo you find the very huge features like our continental glaciation in USA has created the great lakes panchta great lake jo lake Michigan lake Erie lake Huron jo panchta lake bada lake is because of the continental glaciation in North American region same thing if you look at the Finland land of 1,000 lakes that is the output of continental glaciation that has taken place in the past. Then continental glaciation in the features would have like huge plains and large number of lakes and mountain glacier I would important हुए तो glacier तो समुद्र भीतर को खसी हो जैसे पहाड़ भीतर समुद्र भीतर को खसी हो पर लगे ना कोस्ट पैकेज से स्कूपिंग करते बड़ा मटेरियल को मैंने लैंडस्लाइड वाला आएगी रोड करके नहीं जाए and allows the sea water to enter towards the mountain ताकि कौन दी जाए कौन दी fjord बोले अखाड़ी बोले हमारे जाए को आ जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिससे को देखा जाए जो ठीक ग्लेशियर जगह समुद्र को खसे along the mountain slope and erodes the valley through which they are sliding down or falling down and creates a groove inside and allows sea water to enter into the mountain area then ईटा करियो द्वारा कौन है ना जो तांगरा जो जिनसे को क्रिएट हुए that becomes very ideal for the ports Scandinavian country हमारा natural harbors बहुत अच्छी because of this type of action that has created a large number of fjords then empty गुड़ा जिनसे अच्छी so gradually when you will study this you will try to understand तापर then it comes to coastal process and landform coastal process and landform रे कौन हुए what are the coastal processes coast रे कौन चले what is going on coast रे कौन चले coast रे
which are the agents predominant? Wave is a predominant agent, wind is a predominant agent, tide is a predominant agent, storm surge is a predominant agent. Tapare, flooding is a coastal flooding is also another important feature. And each jack hella tar bibhinna prakar agents which are affecting to the coastal morphology. Coastal morphology be affect kare. Then the processes are again the same: abrasion process, attrition process, corrosion process, chemical weathering process, physical weathering process, attrition process, saltation process. सब जिन जगह से ही process जगह पुणे इठी भी operate हुए. कारण गोटे वेब भीतर जदि गोटे माटी बाली आसला से जगह ता भीतर बाड़ी की भी इरोजन भागी की डिपोजिट हुए बीच रे. तो एमती है कि there are coastal agents and coastal processes arise. The coastal processes are affected by coast केते slope अछि. तापर depend करे the intensity of the waves and the intensity of the tidal action. And the slope congenial habo ताहले कटी लगी स्लाइड नहीं सर अच्छी दिए थंडा धर देजी तो टिके असुविधा होची. अच्छा कोस्टल प्रोसेस रे ए जगह कोस्टल एजेंट्स और तार जहा जहा एक्टिविटीज से जगह डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द कोस्ट स्लोप केते अछि कारण ता अनुसार डिपेंड करे जदि बेसी डेप्थ हे जिवो लाइक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ताले वेव होबनी. वेव न हले कण हो सेडिमेंट जगह से जगह रे डिपॉजिट होबनी. सेन डेल्टा फॉर्मेशन होबनी. किंतु जदि स्लोप शैलो रहइबो ताले कोस्ट डिपोजिशन होबो बीच फॉर्मेशन होबो. से पुनी बीच फॉर्मेशन होबो डिपेंड्स अपन मटेरियल कोन अछि कोस्ट रे. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स. वेस्ट कोस्ट तब देखियो हमर जो कंकर मटेरियल्स अछि कर्नाटक कोस्ट महाराष्ट्र कोस्ट बहुत जगह रे कंक्रीटिंग मटेरियल्स अछि ब्रोकन फ्रैगमेंटेड रॉक्स अलोंग द कोस्ट दैट इज ए रॉकी बीच बोली कहै जाय. हमें जो वैली पूरा रही छी ताकर से फ्रैगमेंटेड रॉक्स पूरा रही छी अलोंग द बीच. तेनो सेठी से जिस माने रही छी रॉक्स रही छी जगह भांगी सेठी पडुची. आम केस रे कोन होई जगह अच्छी से जगह वेव रे इरोजन होची जाई कि रिवर्किंग होची तापर से जगह भांगुची पुणी आसिकी कोस्ट पडुची पुणी कोस्ट गडी गडी जाउची. तने ए जो प्रोसेस रे जगह स्लोली ब्रेक करी करी जाउची एंड साइमल्टेनियसली कोन हुए ना फाइन सैंड जगह तले सुखी की रहे ऊपर बाली पवन आसिकी ताको उड़े नि जाय कि दूर को कोर्स सैंड जगह समुद्र भागे थाए. तेनो समुद्र को तमे अप्रोच कला बेलू प्रथमे फाइन सैंड रे चली की जीवो तापर कोर्स सैंड पड़िबो जदि समुद्र पाख पानी पाख पहुंचो. यू विल सी दैट दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन. तेनो एठी हमको जानिया पड़े जे ई वेव रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन की टाइप रो वेव की टाइप रो प्रोसेस क्रिएट करे और की टाइप रो फीचर्स क्रिएट करे. हमर कोस्ट तीनटा जोन अछि जोटा सी और लैंड जोटे मिसे सेटा कहंदी जे कोस्ट लाइन. कि कोस्ट लाइन टा सब बड़े कांस्टेंट न थाए कारण हाई टाइड जतला आसे टिके ऊपर को आसे लैंड ऊपर को लो टाइड जतला आसे टिके भीतर को जाए. तेने ए जो ऊपर को आसे भीतर को जीवा भीतर जति जोन रहिला सी वाटर जो मूवमेंट चलेता भीतर याकू कहंदी लिटोरल जोन बोली. दैट इज द लिटोरल जोन. अच्छा कोस्टल जोन रो एटा गोटे पार्ट दैट इज लिटोरल. तापर एपोर्ट साइड को जो जगह रहिला तार लैंडवर्ड साइड जो रहिला तमे देखियो गोटे बीच पाखरु जदि लैंडवर्ड को आसियो गोटे स्टेज पर तमे गोटे वैली बंध बा जो वैली रिज क्रॉस करके आसियो मेन लैंड को आसियो. से जो वैली बंधटा थाए ताको कहंदी बीच रिज बोली. तो से बीच रिज तापर भीतर को आसला पर से जो पोर्शन रहिला ए सब जगह कहै जाय बैकशोर एरिया ऑनशोर एरिया. तार ना हला बैकशोर एरिया और ऑनशोर एरिया. जदि समुद्र भीतर को लो टाइड पर समुद्र भीतर को जीवो पाखा पाखी 50 मीटर रु 1 किलोमीटर पर्यंत से जो एरिया को कहै जाय ऑफशोर एरिया. तो ऑफशोर एरिया लिटोरल जोन एंड बैकशोर एरिया
ये तीनटा हला प्रिडोमिनेंट एक्शन ऑफ द कोस्टल एजेंट्स ए कोस्टल एजेंट के ई जोन मानक एक्टिव है कि विभिन्न प्रकार लैंडस्केप क्रिएट करंती इरोजनल लैंडफॉर्म इरोजनल लैंडफॉर्म इरोजनल लैंडफॉर्म कोन हबो ना जोटी कोस्ट रे रॉक अछि रॉक जगह खाइबो ता भीतर केव हबो ता भीतर कैम्बरिंग हबो ता भीतर होल हबो ता भीतर माने स्टैक्स हे कि रहिबो ठीक उपरକୁ जो जगह पानी जगह का से जगह इरोजन हे चलथिबो मशरूम टाइप ऑफ रॉक हे कि रहिबो इन जो विभिन्न प्रकार जदि रॉक्स रहिछि रॉक नाही रॉक जदि अछि माने हम ऑफशोर जो ऑनशोर एरिया रे बैकशोर एरिया रे तार से बंद जदि टाइड आसिला बा वेव आसिला ताले ताको भांगी कि नेकी से बीच रे पकेइबो एंड बीच रे पकेइले से रखी बीच हबो then एमती कि there will be formation of beach then beach माने नुह सब बेले रखी एबा सब बेले सैंडी it is depending on the portion which is worked upon by the waves littoral zone रो गोटे एरिया जो एरिया रे कि वेव रो प्रेडोमिनेंस रे जो लैंडस्केप क्रिएट हेता ताको बीच कुआ जाय it may be rocky it may be muddy it may be sandy also what that is also called the rocky beach and muddy beach or हमर जे चांदीपुर पाखरे अछि मडी बीच गोपालपुर पाखरे पुरी पाखरे अछि सैंडी बीच जदि हमें वेस्ट कोस्ट को जिबा ताले महाराष्ट्र केरल कर्नाटक पाखरे जिबा देन वी फाइंड रॉकी बीच इवन गोवा रे बहुत जगह भी रॉकी बीच रहिछि केरल रे बहुत जगह रॉकी बीच रहिछि so this is how different type of beaches are formed so the agents of coastal erosion waves tides would currents भी अछि that is also one of the important features and tsunamis are also sometimes creating landforms तेणु एक्शन कौन हुए हाइड्रोलिक एक्शन कोरोसिव एक्शन एब्रेसिव एक्शन एट्रिशन एक्शन कोरोजन एक्शन इस जदी प्रोसेसेस ऑफ इरोजन एंड देन डिपोजिशन एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन ला इरोजन ही जाउछ एग्रेडेशन ला डिपोजिशन होछ तेणु वी हैव a lot of erosional landforms we have a lot of depositional landforms along the coast तेणु हमर जति कोस्ट रे हमर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहैबा ताले हमर जो ऑफशोर जोन रे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म चला जो आइलैंड जगह क्रिएट हुए चिलिका जो आइलैंड जगह क्रिएट है जार इन द ऑफशोर जोन तो वर्तमान चिलिका लेक भीतर रह जाई छी काहेकि चिलिका लेक हैज बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम द सी कि तो इनिशियल क्रिएशन हैला दैट वाज इनसाइड द सी चिलिका तो ब्लॉक हे नथिला तो ए जगह हमर कह जाय ऑफशोर आइलैंड जेम हमर अब्दुल कलाम आइलैंड कि शॉर्ट्स आइलैंड व्हीलर आइलैंड ई जो जगह अछि ए जगह हमर जे ऑफशोर आइलैंड बोली कह जाय इति कोन हुई ना हमर बीच रु जो सेडिमेंट जाको अंडर करंट है कि भीतर के जाए पानी भीतर के जाए समुद्र भीतर के जाए किछि बाटा गला पर से जगह आउट ट्रांसपोर्टेशन न होई पारे कि डिपॉजिट हो जाए गला पर इन कोर्स ऑफ टाइम से डिपोजिशन दा सी लेवल पर उठे सी लेवल पर उठला पर जे नई रे पठा क्रिएट हो सेमती सी लेवल पर उठला पर किछिटा पिकअप करी जाए सैंड आ सिल्ट आ क्ले आ तापरे किछिटा वेजिटेशन आसी जाए तापर से स्टेबलाइज हो जाए तापर आस्ते आस्ते बढ़िया आरंभ करे किंतु इंटरनल कनेक्शन थाए कोस्ट आडो किंतु सेटा बिडी की थाए जो कनेक्शन रे किंतु सेठी देखा जाए टापू वाला so that is appearing like an island तो ये जे कहला डिपोजिशनल आइलैंड्स किंतु गोटे पहाड़ बुडी की अछि तार ऊपर देखा that is a structural island inside the sea inside the coast inside the offshore zone किंतु ये जे कहला पर डिपोजिशनल फीचर्स जाको कह जाए offshore islands से जे कहला डिपोजिशनल फीचर बीच ला हमर डिपोजिशनल फीचर मडी बीच तापर रॉकी बीच सैंडी बीच ये कहला डिपोजिशनल फीचर तापर हमर लेक्स एंड लेगून्स से जगह along the coast they are also part of the depositional feature erosional features with the stacks mushroom rocks caves camberings तापर holes रॉक जो रहला से खाई खाई की बेर प्रकार शेप रो फॉर्म क्रिएट करियो ताको हमें या ना दै छी हाउ डिपोजिशनल फीचर इनसाइड दी ऑनशोर जोन बा जोटा की लैंड आड़ को रहला बीच रीज पाखरु लैंड आड़ को जो गला जेम तुम देखियो चंद्रभागा पाखरे कोणार्क पर्वत से देखियो कोन देखियो तो बहुत गुडा सैंडिल्स देखियो सैंड बॉय उड़ी उड़ी जाउची डिपोजिट होउची सैंडिल क्रिएट कर they will find a varieties of sand dunes as a sand dune भीतर भी तुम पाइबो लो लाइंग एरिया जो कि water bearing low lying areas bearing fresh water aquifers जो पाइबो
तो से जगह यूज हुए बेले फ्रेश वाटर होल्डिंग पे बोली जो एनिमल्स वन डेवलप करने से जोन से वन दे मेक यूज ऑफ दिस so that is also a part of the divisional feature of the onshore areas or backshore areas. So MG we have different type of landform features associated with waves. कोटी वेव डोमिनेट करे कोटी टाइड डोमिनेट करे सेठी सब सैंडी बीच न होई कि सेठी सब मडी बीच tide brings a lot of mud from the sea towards the river and enter into the river mouth को enter करे this side is a deposit हुए then the river banks become muddy and seashore also becomes muddy as tsunami asile to both the force re ase to it devastates a lot of things physical change takes place beach and on the offshore zone as well as in the shore zone. तापर हमर अछि स्लो प्रोसेसेस स्लो प्रोसेस रे हिल स्लोप केमती हमर चेंज होछि हिल स्लोप रे केमती हमें मेजरमेंट करि परिबा theoretically from the maps and on the ground तापर ताकू केमती हमें ता चेंज को केमती मॉडल आउट करि परिबा ये एम भाବରେ इरोजन ले कोन हो एम भाବରେ इरोजन ले आ कोन होई पारे ई रीजन से के देछि विभिन्न प्रकार थ्योरी जा भीतर रहिछि ऑफ स्लोप डिक्लाइन स्लोप रिट्रीट स्लोप parallel retreat slope replacement ये सब जिनस को रहिछि डिफरेंट वेज की केमती भाବରେ एक्सप्लेन करिसेंती सेम फेनोमेना बट एक्सप्लेन इन डिफरेंट वेज लाइक आवर साइक्लोबियोलॉजी तो सी जगह भीतर अछि एलन रूट्स थ्योरी डेविस थ्योरी पैंक्स थ्योरी they also speak about this slope evolution process तापर हॉटन्स थ्योरी तापर स्टेलर्स थ्योरी एम बहुत जुड़े रहिछि there are many theories relating to this तापर जो यूनिट टी आसिला वर्तमान एटा हला हमर एप्लीकेशन that is what is applied geomorphology हमें कौन करी परिबा how we can do and how to study these geomorphological features and how to map these geomorphological features and how it can be disseminated to the users जो man use करियो से हमें के disseminate करियो and through maps and through different type of outputs and deliverables से जिनस के इतरे डिस्कस करा है मेथड्स एनालिसिस ऑफ जियोमॉर्फिक डाटा जो जियोमॉर्फिक डाटा मिलो माने हाइट डाटा मिलो जेता को केम एनालिसिस करी कोन ता इंडिकेशन मार्क माने कर ओडिसा रे गोटे स्पॉट आईडी गोटे कलेक्शन कली से जाय गोटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कली करी बाहर कली केते हाइट रे केते पीक रहिछि सब जिनस करी के ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग लाइक को जाय हमर जियोमॉर्फिक डाटा रा एनालिसिस तापर ताकू नै कि विभिन्न प्रकार मॉडल बिल्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल बिल्डिंग एमिति भाबरे चेंज होउछि दैट इज इंडिकेशन ऑफ हाउ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस से जिनस अगर केमति किछटा मॉडल देछि जे कि ऑलरेडी आगु हेछि एटम्स मॉडल स्लीव्स मॉडल ना परे स्टेलर्स मॉडल एमिति मॉडल अछि जे कि हमरा डिस्क्रिप्शन में अछि वी विल सी दैट तापर जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग विथ रीजन क्लासिफिकेशंस इस जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग है जो विभिन्न फीचर्स हमें देखिले इन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ये सब जगह गोटे सिंबलिंग प्रोसेस अछि and that symboling process is supposed to be used if we create a geomorphological map of a particular area हमें हमर निजर मन इच्छा उठे आंसर करिया ठीक हबनी we will have to use a standard procedure which is available across the globe to use it as geomorphological mapping ताकू केमति हमें से सिंबल जगह क्लासिफिकेशन केमति करिया और ताकू केमति यूज करिया और तार केमति ताकू गोटे स्टडी करिगी ताकू केमति मैप रे कन्वर्ट करिया ये गोटे पार्ट आ गोटे पार्ट है हाउ वी विल यूज रिमोट सेंसिंग इन जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग ए रिमोट सेंसिंग रे कौन सिखा हुए ना सैटेलाइट इमेज सैटेलाइट रो डाटा में पाउचे इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा किंबा तार गोटे रास्टर डाटा में गोटे पिक्चर वाला पाउचे कलर प्रिंट वाला ताको फोटोग्राफ कहबानी केना फोटोग्राफ रो प्रिंसिपल इज डिफरेंट एंड सैटेलाइट रो प्रिंसिपल इज डिफरेंट ताको फोटोग्राफ कहा जाय ताको इमेज कहा जाय तो सैटेलाइट डाटा हमें पाइबा डिजिटल फॉर्म में जब डिजिटल फोटोग्राफी आजकल होची तो पासपोर्ट डिजिटल फॉर्म में अछि नेला प्रिंट कलो तो फोटो हो गेला ये सैटेलाइट डाटा जाके गोटे एरिया रा सेमति बिना डिजिटल रे ताको नेकी सॉफ्टवेयर को प्रिंट करले जेटा क्रिएट ए मैप ऑफ एरिया विथ डिफरेंट कलर्स तो सेमति हमर ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा को यूज करेगी
how we can explore the different type of landforms. Landform जाको केमते हम स्टडी करि परिबा कोठी कोन अछि काहेकि ना एटा करबा द्वारा हम कोन सुविधा हुए कारण हम फील्ड स्टडी कले इट टेक्स a lot of time. Field study कले it is strenuous, it is time consuming, takes a very long time to go around the entire place, and there are many areas which are unaccessible जो से जगह जाई हबनी तम तक मैपिंग करि हबनी आ तापरे जो जगह आसीबो भी डाटा सर्वे करिकी से जगह भी वन टाइम डाटा हबो काना से जगह थरे प्रिंट कर देला पर तापरे आ ताकू किछ चेंज करि हबनी अल्टर करि हबनी we cannot manipulate that further. In the remote sensing use रे कोन के कंप्यूटर जे यूज करू छे आ जीआई सॉफ्टवेयर यूज करू छे remote sensing software यूज करू छे data can be stored in the computer, data can be manipulated in the computer, data can be updated in the next year gradually ताके अपडेट भी करि हबो आ ताके चेंज भी करि हबो ताकू मिनिमम कॉस्ट रे सेव करि हबो आ ताकू प्रिंट करि हबो जतो दरकार त ए बहुत गुड एडवांटेज रही छी आ तापरे by studying remote sensing you are bringing the laboratory to the bringing the field to the laboratory माने गोटे ग्राउंड कंडीशन तक तुम laboratory भीतर को नहीं आछो जोथरे की तुम देखि की ताकू इंटरप्रेट करि परछो the same 3D dimension में तुम देखि परियो किबा कलर पिक्चर 2 dimension में देखि की मैपिंग करि परियो तो सेटा केमति करा जिवो and how what are the principles behind and how you are supposed to do it सेतिर टिके एथिरे भी रही छै that is morphological mapping. अच्छा ताकि जियोमेट्री टेक्निक्स कोन तमर रही छी ए जगह तो थियोरेटिकल पेपर ता तो प्रैक्टिकल नहीं किंतु प्रैक्टिकल रे इथु किछटा एक्सरसाइज करेबे जो प्रैक्टिकल पेपर अछि कार्टोग्राफी पेपर आ तापर एप्लीकेशन पेपर अछि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पेपर ए सब जिंसर करेबे there are tools and techniques of geomorphology कोन tools and techniques यूज हुए landform changing nature of geomorphic tools techniques current major tools and techniques of geomorphology कोन tools यूज हुए की टाइप रो सर्वे जियोमेट्रिक सर्वे कले कोन हमर दरकार गोटे जगह को जीवा में स्टडी करिया गोटे लैंडफॉर्म स्टडी करिया गोटे फॉरेस्ट गोटे रॉक बॉडी अछि तार रॉक स्लोप केमति करिया स्ट्राइक केमति बाहर करिया तेनु तार एरिया केमति बाहर करिया तार डिस्टेंस केमति बाहर करिया ए सब दिन से गला गोटे साइज ऑफ दी कना को कोन तो मॉर्फोलॉजी ना दैट हाउ यू स्टडी दी रॉक तेनु ई जको इंडिकेशन मिले कोन इंडिकेशन मिलियो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन किंतु ये करिया पे हमहु वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स सर्वे टेक्निक ही पारे इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स ही पारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स ही पारे रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स ही पारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ही पारे so there are various techniques which are followed in study जानी गोटे पार्ट हला how geomorphology related to hazard and risk assessment land degradation and soil degradation ई थ्री केमति तमर geomorphology रा रोल रही छी और geomorphology केमति यूज हे पारे hazard और risk assessment रे हमर माने कोस्टल hazard coastal erosion होउची geomorphology you have to understand the geomorphology of the coast and then only you can माने characterize जे इठी भाबे एमति होउची न जानिबो ताले you can blind माने the fools can trade in where angels fear ए अवस्था को जीवो किंतु जानिबा दरकार न जानिले तमरो साइंटिफिक स्पेकुलेशन जगह ठीक अपन भूल हो then you need अच्छा सेमली को फ्लड रिलेटेड ओडे रिवर को स्टडी करिया अछि केते फ्लड आछि काई आछि केते इंटरवल रे आछि केते डिवास्टेशन करछि बैंक रे कोन चेंज करछि कोर्स रे कोन चेंज करछि इस दिन से भी रही छी इन सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन इथरी भी कोन हम जो रोल रही छी सॉइल को टाइप रो रॉक रे सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन हो छी इज सब भी रही छी along with that also climatic factor associated है कि desertification भी रही छी so the landform and climate together explains how the desertification process is going to indicate for a particular place and degree of desertification कोठी अछि dry area को develop होछि इस then you are trying to know some of the practical application aspects of geomorphology knowledge geomorphological knowledge in real world रे तम जदि अप्लाई करियो चाहिए ताले ई जिंस केमति भाबरे यूज हो ओके तापर the last one is landform and environmental management. This is also one of the important areas of contribution of geomorphology towards understanding the environment and managing the environment. एठी कोन करा है जी ना और प्रेजेंटेशन निया है जी the environmental management रे man has a major role human as a geomorphication and मनुष्य बहुत समय बहुत दिन से चेंज करछि to his benefit in the environment कोन करछि सब प्रकार करछि मैन नहरी बंध बांधुछि बैरेज करछि
रिवर कोर्स को चेंज करूची रास्ता करके रिवर को ओरिएंटेशन करूची एपटे जीवा पई सेपटे जीवा पई दे चैनलिंग दी रिवर्स सेम थी जदी हमें स्लोप रे माउंटेन स्लोप रे देखिबा रास्ता करके हम लैंडस्लाइड जोन क्रिएट कर दोची लैंड स्टेबिलिटी रहुनी एंड रिलीज टू लैंड इरोजन लैंडस्लाइड्स then human as a geomorphication value उठे नहीं कि हमें नई बैठ जाएगा मतलब ये करूचे and depositing over the land तो तार आउट नेगेटिव इंप्लिकेशन भी अच्छी एनवायरनमेंट ऊपर तो एमती तापर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी रे रोल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वेरी इंपोर्टेंट तेरे ग्राउंड वाटर कंडीशंस की टाइप रो रॉक पे की टाइप रो इक्विफर रे रही छी तार इक्विफर रो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी केते वाटर पोरोसिटी केते वाटर रिचार्ज कैपेसिटी केते केते वाटर होल्ड करिवो केते वाटर तुम माने एक्सप्लोइट करि परिवो ई सब जिनिस का तापर सरफेस हाइड्रोलॉजी ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी इज डिपेंडिंग a lot on the जियोमॉर्फोलॉजी तापर वाटरसाइड मैनेजमेंट जेतोल आसुची लैंड यूज प्लानिंग आसुची वाटरसाइड भितरे को लैंड को कोन भाबरे यूज करबा को पर्पस ले यूज करबा लैंड यूज प्लानिंग ता सहित एनवायरमेंटल मैनेजमेंट माने प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट केमती को जगह रे सॉइल कंजर्वेशन कौन स्टेप्स लिया जीवो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कौन स्टेप्स लिया जीवो बैंक यूजर को केमती भाबरे कंट्रोल करा जीवो वाटर को केमती भाबरे यूटिलाइज करा जीवो इन सस्टेनेबल वे ये सब जिनिस है राइट सो लैंड फॉर्म एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज लिटिल इंपोर्टेंट तेणु यही तो कहला हमर दिस इज ऑल अबाउट आवर अच्छा हमर आ भितर से माने देइचंदी केतोटे बहिर ना देइचंदी जो बहि जाको कि तमे जदी पाई पारुछ तमर जदी ई एक्सेस अछि तले यू कैन गेट ऑल दिस बुक्स ता भितर किछटा भलो बहि भी आ भितर देइचंदी बहुत भलो भलो बहि देइचंदी ये देखो सेकंड बहिटा होते बहुत भलो बहि फर्स्ट बहिटा होते भलो बहि जियोलॉजिकल टेक्निक सेकंड बहिटा जियोलॉजिकल सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ सिनोजोइक लैंडफॉर्म सिनोजोइक माने ए जो हमर सिनोजोइक पेलियोजोइक मेसोजोइक सिनोजोइक माने जो लास्ट 10 इयर्स रो जो 10 मिलियन इयर्स रो जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ता सर्विस दी कारण दैट इज व्हाट इज वी आर सीइंग सेटा गोटे भलो बहि एटा गोटे स्पेशल एनालिसिस जियोलॉजी वेचरले एटा गोटे भलो बहि देइचंदी एटा गोटे देइछ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रे भलो बहि गोटे जियोमेट्रिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट तापर ए पी दयाल दा टिके पुराना बहि हो किंतु आ गोटे बहि अछि इंट्रोडक्शन टू जियोमॉर्फोलॉजी कार्लेन गुप्ता एटा गोटे भलो बहि हैंडबुक ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एटा गोटे भलो बहि बेसिक्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एटा गोटे भलो बहि तापर आ गोटे बहि अछि मैपिंग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट ई गोटे तमर स्पेसिफिक पर्पस रे यूज परिबो एटा हगेट रे बहिटा दिस इज वेरी गुड टू 2008 रो पब्लिकेशन फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज ए वेरी गुड बुक रटलेज पब्लिकेशन आ बाकी जो जगह अछि जे जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंद्र सिंह इज ए वेरी स्टैंडर्ड बुक जोटा कि हमर इंडियन अथर भीतर जाउची स्टैंडर्ड बुक आ एटा गोटे भलो बहि प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बाय थन बहि जोटा कि फंडामेंटल कांसेप्ट एंड लैंडफॉर्म से जगह सब मिलिबो बट ओल्ड क्लासिकल बुक बट इज गुड एट अंडरस्टैंडिंग ଆଉ ଏଇ ଜାଗା କିଛିଟା ଭଲ ବହି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଛଡା ବି ଆଉ କିଛି ଭଲ ବହି ଯେତେବେଳେ ପାଉଛ ତା ସହିତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଦିଟା ଭଲ ବହି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଓମର୍ଫୋଲॉजी ବାଇ ସୁଗଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋର୍ଲେ जियोमॉर्फोलॉजी बाय सुगडेन SUGDEN सुगडेन एंड सोर्ले এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହିଟେ ଗୋଟେ ବହି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଓମର୍ଫୋଲॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी बाय स्ट्रेलर जियोमर्फोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी बाय फिजिकल ज्योग्राफी ଆଉ ଗୋଟେ जियोमर्फोलॉजी बाय स्ट्रेलर एन स्ट्रेलर ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି एन एंड एच स्ट्रेलर ମାନେ ଏ ଦିଟା ବହି କୁ ତମେ चेष्टा करियो यदि पाइया पे यू कैन कीप इट एज ए रेफरेंस बुक फॉर ऑल टाइम टू कम बहुत भलो बहि दिटा ओके तेणु एति दिन समय पारिले चारटा क्लास रे आई थिंक आई हैव गिवन ए ब्रीफ नॉट सेल ऑफ एवरीथिंग दैट इज सपोज टू बी कवर अप अंडर दिस आउ तापर तमर काउंसलिंग क्लास अछि कि नै हम तो जानिनु कोन तमर सिस्टम आ भीतर भी हम जणा नै तो देखियो जदि आउ थरे केतो पुन चांस आसे वी विल discuss some of the important areas with a specific topic दरकार पड़ी पारे I think we can
go into that if a second chance comes to us. Okay. Sir, good evening, sir. Good evening. Can go. Sir, assignment रे गोटे 3 number question टा अछि. What is mass wasting? Discuss slides in detail. Mass wasting कहले कोन? आमे तो अभी mass movement पढ़िलु. तो wasting result, mass movement result is mass wasting. When destruction of damage done by the mass movement process. ସେଇଟା ହିଁ mass wasting, ସେଇଟା ହିଁ mass movement. ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରେ କହିଲେ mass movement କହୁଛେ, otherwise ତାକୁ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ mass wasting ବୋଲି. ओके. आउ सर गोटे जियोमॉर्फिक मॉडल्स गुडाक कहले कोन हबो? जियोमॉर्फिक मॉडल्स कहवा माने हमर जते प्रकार थियोरीज रही छी, जियोमॉर्फिक रिलेटेड थियोरीज, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म, जहाँ थियोरी अछि सब जगह गोटे मॉडल भितरे जाउछि. They are all models. Models माने when they are like mannequins, they indicate you what is likely to look like or happen with a particular setup. तेणु मन जमती हमर साइकिल ऑफ इरोजन इज अ मॉडल. कौन मॉडल? इट्स ए मॉडल जे माने कहूछि जे कोनोसी लैंडस्केप रे फ्लूवियल हो, ग्लेशियल हो, इरो कोस्टल हो, कास्ट हो, the landform evolution will take place in the youth, masculine, old age, indicating the characteristic features of the youth stage, characteristic features of the maturity stage, characteristic features of the old age, revealing that how the change of energy takes place in the progress of life from low energy to high energy to again declining energy, and accordingly the work is done by the person. सेमती ई जगह रे प्रोसेस जगह भी सेम भाबे काम करी केमती लैंडफॉर्म क्रिएट करे. एटा मोटे मॉडल हे गेला. तमे भाबिबो जदि मु ई मॉडल रे जीवी तार यूथ रे कोन हेछि, मैच्योरिटी रे कोन हेछि. सो दिस इज व्हाट इज ए मॉडल. जेते थियोरी अछि सब जगह गोटे प्रकार मॉडल बोली धरा जाई पारिबो. ये गला कोन कि ये गला नोर कांसेप्चुअल मॉडल. जो जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉडल, जो जगह कंप्यूटर रन करियो, मु आज गोटे जगह रे तार स्लोप स्टडी कली, तार रॉक स्टडी कली, तार कंपोजिशन स्टडी कली, तार मटेरियल साइज स्टडी कली, ताको सब फीड करी कि गोटे जिंस एक्सपेरिमेंटेशन कली, बाहर कली कोन गोटे पैरामीटर बाहर कली जे ई रॉक जगह जल्दी भागिबो. त सी गोटे मॉडल. तेने ये गला क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. तेने मॉडल माने हला एया. दिस इज व्हाट conceptually it is a methodology for exploring something under the study. बुझियला ना? Okay, नहीं sir. बुझियला? Yes, sir. ठीक अछि. बाकी जिनस तो हमें जानी नहीं. देखिबा केबे कोन चांस पुनी आदर पड़िबो. If you see that any other chance comes, I will take little more details into some of the areas which are required for you. जदि आसीबा उठे केतोळे I will. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, there is a line I came across. Exogenetic forces are primarily destructive and aim to alter the different relief features of Earth's surface by smoothing, carving, sculpting them through a variety of processes. Sir, means I kind of describe or explain it. How to means what does it mean exactly? Meaning God. Exogenous processes and endogenous processes. Exogenetic processes and endogenetic processes. दी प्रकार process अपन operate करूँ on the surface of the earth. Exogenetic process माने जो processes जो surface ऊपर काम करे. और जो processes endogenic है जो process का भीतर काम करे. earth भीतर crust भीतर काम करे. और origin हुई. तेणु मानेकर हमारा convection current movement is endogenic activity. Volcanic eruption is an endogenic activity when it is inside the crust. Earthquake force is an endogenic activity. ये कहलो सब endogenic force. तापर जदि माने भीतर गोटे जगह रे collapse करूची crust, that is endogenic activity. Subsidence inside the ocean. मानकर गोटे rock layer अछि, तापर गोटे cavity अछि, से cavity रे बहुत गैस थिला, तो पानी से जगह पर्कुलेट करके जाई पहुंची, गैस तो रिलीज हो गेला, तापर cavity रे collapse कर गेला. So that is endogenic activity. Land subsidence and collapsing. अब एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हला जहां हमारा सरफेस ऊपर चेंज करूची, दैट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. एक्सोजेनिक प्रोसेस माने हमारा जितने एजेंट्स आर देयर प्रोसेसेस आर ऑल एक्सोजेनेटिक. हमारा
the heating, cooling, and then change of the landforms. से जगह the exogenetic processes. तापर जदि हमर meteorite आसी पड़ला ताको कौन extraterrestrial processes, but it is exogenic, but extraterrestrial process. तो ये जगह सब extra ये जिनसे देखो landform को कौन change करे. Endogenic processes, so endogenic exogenic processes are mostly related to third order landform formation में काम में आसंती. The exogenic processes are mostly responsible for eustatic movement, isostatic movement, pyrogenic movement, orogenic movement, and formation of volcanism, earthquakes, related tsunamis. This is correct. So it is related to. So the exogenetic is mostly go with the surface landforms, and other data will go with the source of origin at the interior of the earth. But the exposure may reveal some of those landforms on the surface. They are not created on the surface. The agent is the force is generated from inside. Exogenetically, the force is generated on the surface. Then our Thank you, sir. the agents are nothing some exogenetic process. A slope mass wasting is exogenetic process. Reverse cycle is exogenetic process. Car cycle is exogenetic. सब जगह exogenetic process. Our desert is heating, cooling, और जो rock disintegration, weathering and erosion से जगह भी exogenous process. Okay. Sir, means we can say any changes that are happening means we can see them visibly, means they are happening because of exogenic forces. Whatever change that we see on the surface of the earth, कोई नॉइरो कोर्स चेंज हो गया, that is exogenic process. हमारा तीसरा रिवर सॉरी सोन रिवर आ तापर हमरा कोसी रिवर बहुत थोर तार कोर्स चेंज करछि. इवन महानदी रे कोर्स चेंज करछि. हमर प्राची रिवर थिला बुडी गलानी बुडी गलानी तो जगह देवी रिवर क्रिएट हो गलानी आ बहुत गुडे रिवर भी एमदी मैनेज कर जाइछि. सब दिस आर ऑल our माने गंगा जमुना सरस्वती जो तीनटा जिनिस मिश्रित रे सरस्वती रिवर आ नाही मतलब एक्जिस्ट करने से बुडी गलानी. These are all changes. Examples of changes on the surface. सेमती हमर जदि जे कोनसी गोटे जिंस को स्टडी करबा कोन चेंज होउची माने कि गोटे रिवर वैली रे हम चल चली गले कि देखिले ऑब्जर्व करले कोन चेंज होउची रिवर वैली रे से जाके भी दैट आल्सो कैन बी माइनर ऑब्जर्वेशंस ऑफ चेंज. ହେଲା. Thank you, sir. ओके ताले मन करबा ना आ पचारि होछि. सर गोटे डाउट थिले सर. सर आपण नंबर टा जे दियंते किछि डाउट होता किछि जदी गाइडेंस होता काली देजी. सर काली मु थिलिनी और लिख 94373 तमरा साइट रे ग्रुप रे पूरा आसीबो नंबर टे ता ग्रुप रे इनपुट करियो 94373 02280 02280 Okay, what is your impression on this? I mean, jati discuss kale, do you think that it is relevant for you and you have got a broad idea about the course content and what are the topics that are going to be covered? कौन कौन ता भितरे रहउची किछि आईडिया हैला तो ना नहीं? यस सर. क्वालिटी किछि आसिला ना नहीं कोर्स ऊपर कोर्स कंटेंट ऊपर यस सर. केना एटा होछि सब इंपोर्टेंट. केना तमे जतोडे जतो सब्जेक्ट पढुछो तारा टेरिटरीटा कोन को पर्यंत लंबिची जानिया दरकार प्रथमे. So these 4 classes have explained you about your territory of geomorphology. Geomorphology territory को पर्यंत लंबिची और कोन अछि ता भितर so that you can rule this subject. So that is what is the purpose. काउंसलिंग क्लास तमको ये जिनिस कहबा देला तम मते जानि परले कि कोन जिनिस विषय को जगह कोन लिखि हबो काको किंता अमलगमन करि हबो काको का संग मिसि लिखि हबो कोड गला से फोन करलो तो पळे जियो अरे ना ऑफिस हम पार्किंग को भी जाऊ छे. ओके बंद करबे ताले. सर गोटे डाउट थिला लास्ट डाउट सर. सर माउथ ऑफ द रिवर और रिवर बेसिन कौन सा सेम?
River basin means the area from which water is collected and passing through the river. ରଖି ପଳେଇ ଆସ ଏପଟୁ ମାଉଥ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆ ଯୋଉଠିକି ନଈର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ଜାଗା ନଈ ଏଇ ନଈ ମେନ୍ ନଈ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ବା ମିଶିଛି, ସେଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭର ବେସିନ ବୋଲି ବା ରିଭର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ରିଭର ମାଉଥ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏରିଆ that is covered by this particular river and its tributaries and distributaries. ତେଣୁ ଏଇ ନଈର ପାଣି ହିଁ ସେତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ, ସେ ଏରିଆ ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ହେଲା ତମର ୱାଟର ଡିଭାଇଡ ଆଉ ୱାଟର ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେଇଥିରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କ୍ଲାସ। ଆଉ you need to clarify your doubts, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ବନ୍ଦ କରୁଛି ତାହେଲେ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you, sir. Okay. Wish you all the best. Do well with the subject and with